Should we start now? Yes, our participants will join. So welcome all participants in today's webinar in our Lakshmi Nagar CP study circle. Today we have very renowned, I think all of Chadauntants knows him very well. CA Pramod Jain ji, a Central Council member of our ICI. First of all, I welcome Pramod Jain ji to our study circle, and thank you, sir, for giving your precious time. And now I request Asha ji to give brief profile about Pramod ji. Thank you, Hemant ji, and thank you, Lakshmi Nagar CA Study Circle, to give me an opportunity to give formal intro of Pramod sir. Welcome, Pramod sir, to this CA Study Circle, and thank you so much कि आपने हमारा ये accept किया and आप यहाँ पर आए. And participants, I guess कि हर person यहाँ पे जो भी हो प्रमोद सर को बहुत अच्छे से जानते हैं. प्रमोद सर हमारे काफी टैलेंटेड और रिन्यूड स्पीकर हैं ऑन कंपनी लॉ, इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स में इंटरनेशनल टैक्सेशन इंक्लूडिंग. तो वेलकम सर. एंड सर हमारे प्रीवियस सेंट्रल काउंसिल मेंबर रह चुके हैं. कंग्रेचुलेशन सर फॉर वंस अगेन कि आप दोबारा से सेंट्रल काउंसिल में आए. एंड आई होप कि आप हमारे इंस्टीट्यूट को और भी अच्छी ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे. आपके प्रमोद सर की एक अच्छी बात रही है कि इन्होंने अपने हर साल का, जो फर्स्ट टाइम सर सेंट्रल काउंसिल में आए, सर ने अपना रिपोर्ट कार्ड शेयर किया है टू एवरीवन. एंड आई डोंट रिमेम्बर एनी अदर पर्सन जिसने कि अपना इतने ठीक तरीके से रिपोर्ट कार्ड शेयर भी किया हो. तो थैंक यू सो मच सर कि आप हमें इस चीज से भी अवगत कराते रहते हैं कि क्या क्या वर्क हुए. अदरवाइज हमें पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा है. So thank you so much. तो फ्रेंड्स, आपको प्रेजेंट था सीतारामन मैम ने, उसके बारे में हमें बताएंगे. एंड सर डायरेक्ट टैक्सेशन का पार्ट लेंगे. इनडायरेक्ट टैक्सेशन के लिए कल है हमारा. आज जितनी भी हमारे यूनियन बजट्स डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड चीजें हैं वो हमें बताने वाले हैं. तो वेलकम सर, प्लीज. आपकी आवाज ब्रेक हो रही है आशा जी. सॉरी सर. नहीं कोई नहीं. Thank you very much Asha ji for the very kind words. So nice of you. CA Hemant Bagheria ji, convener of the Lakshmi Nagar CA CP Study Circle. In absentia Sudhir ji, the deputy convener of Lakshmi Nagar CA CP Study Circle. Asha Sharma ji, the coordinator for today and a very dear friend, and all my dear friends out, सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार. And at the outset I thank you all from the core of my heart for always supporting me wherever I have required, not only mere elections but apart from elections also, whatever I have tried and contribute to the profession or otherwise, you have always been supporting me. I really thank from the core of my heart for always being there for me. And I thank Lakshmi Nagar CP Study Circle specifically for inviting me to share my views on the direct tax proposal of the Union Budget 2014. And for that, I'll be sharing a PPT. Ek second. Hello. 957148. Sorry. ऑफिस में है तो थोड़ा बहुत हो जाता है. But yes, I'll be sharing my presentation. And as usual, what I intend to say that अगर आपका जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं
उस पे कभी कोई भी issue हो तो either you can unmute and ask or you can put that in the chat box. So I'll be seeing in the chat box, and then we'll be going further and discussing that. And yes, there is a bit of difference between what we talk about when we are going virtual or when we are in the physical one-to-one meet. So the discussion levels could be different, but yes, I'll request each and everyone who's present here to, without hesitation, put any questions which you feel so related to the subject which we are talking about, and put that in the chat box, right? So I'll be sharing my presentation and then we'll be going ahead. मेरी प्रेजेंटेशन नजर आ रही है आशा जी? सर आ रही है, प्रेजेंटेशन आ रही है सर? आ रही है मुझे, ठीक है, थैंक यू. So yes, sir. आ रही है, great. So talking about this Union Budget 2022, this budget now over the few years, now it has shifted from 28th February to 1st of February 2022. So this year also it was presented by our Honorable Minister of Finance, Nirmala Sitharaman ji, at 11 a.m. And though there was a temptation to give a populist budget because of various factors, including the elections in 5 of the states, out of which one of the state is one of the very bigger states where the stakes are quite high for the ruling party. Yet resisting that temptation to give a populist budget and going ahead with no major changes in the tax regime, bringing the stability. Okay, not frequent changes in the taxation and all those things, but yes, streamlined certain things. And I would say that this budget was more focused on infra development, sustainability, digitization. Of course, it would help a lot apart from the direct taxes provision or the indirect taxes provisions on the other matters. But yes, even in the direct tax provisions, the emphasis is there on streamlining various provisions, which would result into few opportunities for the professionals also. जब स्टार्ट हुआ यूनियन बजट का डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल्स पार्ट बी, तब स्टार्ट हुआ और खत्म हो गया, पता ही नहीं लगा क्या चेंजेस आए. बट व्हेन वी went through the bill portion and the memorandum portion, which was more than 100 pages, there we saw that there were around 83 amendments. We'll be discussing major amongst them, that what were these amendments. So going straight forward, though I said that there is no change in the tax rates, yet there are certain changes in the tax rates in relation to surcharge, I would say. Let us say surcharge first. So if I talk about surcharge, तो पहला चेंज किया उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटीज के सरचार्ज में. अगर हम देखें आज की डेट में हर एक केस के अंदर दो रिजाइम्स अवेलेबल है. इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए भी ओल्ड रिजाइम एंड न्यू रिजाइम, कंपनीज के लिए भी ओल्ड रिजाइम एंड 2 न्यू रिजाइम्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए भी ओल्ड रिजाइम एंड न्यू रिजाइम्स. एंड दे वांटेड द टैक्सेशन of the old regime of companies and cooperative societies to be at the same level playing field. We know that in the case of companies, surcharge kitna hai aaj ki date mein? Surcharge is in case the total income is more than 1 crore but less than 10 crore, then the surcharge is 7%, and more than 10 crores it is 12%. But in cooperative societies, it was above 1 crore, it was directly 12%. So bringing it at par with the companies, the surcharge has been reduced from 1 crore to 10 crore to 7%, and of course 10 crores and above it is 12%. Another surcharge change, and which is very important for all of us to understand. आज की डेट में अगर हम बात करें इंडिविजुअल एचयूएफ में, तो अगर उनकी इनकम 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है, देन इट इज 10%. 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है, देन इट इज 15%. 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है, देन सरचार्ज इज 25%, एंड मोर देन 5 करोड़ इट इज 37%. अगर किसी इंडिविजुअल चीफ की टोटल इनकम
is exceeding any of these limits, surcharges are these. Right? Now, last year, I would say, it was, I suppose, from financial year 2021, the dividend was made taxable. Earlier, dividend was tax-free, and where DDT was to be paid. So now, when it was made taxable in the hands of the receiver of the dividend, there was a lot of hue and cry from the high net worth individuals. They were saying that, okay, dividend double एक company को दोबारा tax देना पड़ रहा है, आप individual के हाथ में tax कर दो, तो individual के हाथ में उन्होंने tax कर दिया. But the problem was with the high net worth individuals, because when they were holding the promoters of various listed and other companies, they were receiving huge dividends. So उनका surcharge 37% आ रहा था, तो उनका tax rate 47.5% ऐसे एक करीब पहुंच गया. उनका this is quite high. So in case of dividend, they restricted the surcharge at 15%. उनका नो, हम एक relief दे रहे हैं. We don't want higher income out of such specified incomes. So 3 incomes को restrict किया उन्होंने 15% में. One is dividend, which I have talked about. Second is short-term capital gain on shares, जहाँ STT पेमेंट होता है, जहाँ टैक्स का रेट 15% है, वहां पे उन्होंने सरचार्ज भी कर दिया 15%. एंड 112A, जहाँ अगेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स है, जहाँ टैक्स रेट है 10%, वहां पर भी सरचार्ज उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया 15%. फिर ये कुछ केसेस सामने आए कि लोगों ने अपनी इंडिविजुअल्स ने अपनी इमोरल प्रॉपर्टी बेची, ज्वेलरी बेची या अनलिस्टेड शेयर्स बेचे. तो उस केस के अंदर 1 साल के लिए उनकी इनकम क्रॉस कर गई 2 करोड़ या 5 करोड़, और सरचार्ज इज क्वाइट हाई. तो उन्होंने कहा इन केस ऑफ ऑल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112, द surcharge would be capped at the rate of 15%. So this is one of the rate changes. What we naturally do nowadays, normally do nowadays, that we put into the software and it calculates the tax rates, interest and all those things, surcharges, etc. But yes, sometimes we need to know these rates and understanding that the surcharges are capped on this, because in case any client comes to a professional and he wants to know, okay, what would be my approximate outgo of the tax, then I should be very careful in guiding him, in consulting him, giving him the consultation, okay, what is the surcharge, right? So I should know about it. Second change in tax rate is in relation to AMT. We know there are 2 provisions. One is MAT, minimum alternative tax under section 115JB, which is for companies. And second is AMT, alternate minimum tax, which is for other than companies. AMT was reduced from 18.5% to 15% last year for all companies, but AMT was not reduced. To bring the cooperative societies and companies at par, this year they have proposed to reduce the AMT from 18.5% to 15% only in the case of cooperative societies, not in the case of proprietorship, partnerships or LLPs or firms. उनके लिए AMT का रेट अभी भी 18.5% है. Also last year when the MAT amendment was made to last few years, when it was reduced from 18.5% to 15%, they also reduced for a unit in IFSC from 18.5% to 9%. MAT में कर दिया था, AMT में करना रह गया, तो AMT में भी कर दिया, AMT में भी कर दिया. So these were the changes for AMT and surcharge. Apart from this, there is another change, I would say, in the tax rate specifically, because there was one of the sections which provided for a reduced tax rate, which is 15% in the case of specified foreign company. मान लीजिए इंडिया में एक कंपनी है, उस कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया किसी फॉरेन कंपनी में जहां पर उसके पास होल्डिंग है 26% एंड अबव. इन दैट केस अगर वहां से डिविडेंड मिलता है तो टैक्स रेट होता था उस डिविडेंड का 15%. ये तब की बात है जब डोमेस्टिक कंपनी के केस से जब डिविडेंड मिलता था तो कंपनीज के हाथ में वो टैक्स फ्री होता था. But last year it was made taxable in the hands of the companies. So that was taxed at the rate of normal tax rate, 25 to 30%, 22%. But
the dividend received from the specified foreign company was taxed at the rate of 15%. So that 15% rate which was there has been abolished. Now, what used to happen that these specified foreign companies, they used to declare a dividend and withhold tax at the rate of 15%. तो जो इंडियन कंपनीज थी वो उसका टैक्स रेट भी 15%, विदहोल्डिंग भी 15%, तो उस 15% को उससे एडजस्ट कर लेते थे. And further, they used to get deduction under Section 80M in case they declared the dividend further out of those dividends. So double benefit that way. But now this 115 BD has gone. 80M is still there. 80M is still there. So those changes are there for the tax rates. Any questions up to this point, please? You can put that in the chat box. अगर किसी का कोई question है तो. अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो प्लीज कीप इन द चैट बॉक्स. आई विल बी लुकिंग बैक एंड देन सीइंग एंड रिवर्टिंग बैक. राइट, चलो, great. Now coming to one of the very important points, which is updated return. And again, this I would say is an opportunity for all the members. आज की डेट में मान लीजिए कि आपको एक रिटर्न फाइल करनी है फॉर असेसमेंट ईयर 2022-23, यानी जो मार्च 22 आ रहा है. मेरा एक क्वेश्चन है कि इसकी मैं रिवाइज रिटर्न या बिलेटेड रिटर्न कब तक फाइल कर सकता हूं. ओरिजिनल सबको पता है 139(1) के अंदर, रिवाइज या बिलेटेड मेरा 139(4) या 5 में लास्ट फॉर असेसमेंट ईयर 22-23 कब तक कर सकता हूं, कब तक कर सकता हूं, क्या लास्ट डेट होगी. और कोई आंसर, एक ही आंसर आया. एनीवन एल्स? ये तो सबको पता होना चाहिए ना कि मैं असेसमेंट ईयर 22, आप एक्सटेंशंस भूल जाइए. सुनील जी और आशा जी दोनों का आंसर सेम है, 31 दिसंबर 22, एंड दैट इज करेक्ट. दैट इज करेक्ट, 31 दिसंबर 22. सो कईयों के माइंड में होता है कि 31 मार्च. इट इज नॉट 31 मार्च, इज 31 दिसंबर. And now from 1st January 23 to March 23, I cannot file any return. Any return. Now, to give the opportunity, they have introduced subsection 8A in section 139 with effect from 1st April 2022, where an updated return, they have titled, it is not, I would say it is a nomenclature which they have created in the memorandum, but nowhere written anywhere else. So I would say a return under 139(8A), which is an updated return, can be filed within 24 months from the end of the relevant assessment year. यानी कि जैसे सबने कहा कि इसका मैं 31 दिसंबर तक फाइल कर सकता हूं रिवाइज्ड या बिलेटेड रिटर्न. 1 जनवरी 23 से 31 मार्च 23 तक कुछ नहीं कर सकता. एंड अपडेटेड रिटर्न I can file from 1st April 23 to 31st March 25. Updated return file कर सकते हैं. Updated return can be filed even if the original or belated return was not filed. पहली बार फाइल कर रहे हैं तब भी अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं. आपने पहले फाइल कर दी ओरिजिनल, रिवाइज्ड या बिलेटेड, तब भी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं. लेकिन what are the cases where you cannot file an updated return? I should be knowing this. हम क्लाइंट्स को सीधा ये नहीं कहते हाँ जी कर देंगे, राइट. सो पहला केस कि कहां पे हम इसको फाइल नहीं कर सकते, which is as per the current budgetary provisions, current budget provision, and not if any amendment is there while enacting the law. First of all, it cannot be a return of loss. यानी कि मैंने ओरिजिनल रिटर्न फाइल नहीं किया और मैं पहली बार रिटर्न फाइल कर रहा हूं तो रिटर्न लॉस के नहीं हो सकती अपडेटेड रिटर्न.
सेकंड केस, मैंने ओरिजिनल रिटर्न फाइल की थी 10 लाख रुपीस के लॉस की, मेरी कोई इनकम छूट गई थी, अब मैं इनकम उसमें ऐड कर रहा हूं, एंड नाउ after adding that income my loss is reduced and remains to 2 lakh rupees. Can I file as per the current proposed provision? No, I cannot file, because my updated return would be return of loss. Though it seems to be a bit harsh, but still we have suggested to CBDT that in case an original return is filed and that results in reduction of loss, then it should be allowed. Just like in this case, where they say if there is effect in decrease in tax liability, if the return is already filed, then it should not be allowed. Then it should not be allowed. It will not be allowed. So similarly, we have suggested it should be there for the return of loss. Then in case a return is already filed under 139, 14 or 5, then the loss cannot be increased, point number one. And second, if it is original return, the return should not be a loss. This we have suggested. Let us hope that it comes like that way. Otherwise, currently, if it is a return of loss, you cannot file the updated return. Whether it is original also loss and updated also, it results in loss, though reduced loss. Still, you cannot file. Third case where you cannot file an updated return is where the updated return results in refund or increase in refund. आपने पहली बार रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उसमें रिफंड है, या फिर आप रिफंड के लिए आपने कहा था कि 2 लाख रुपए का रिफंड है, आपने रिटर्न फाइल की ओरिजिनल रिटर्न, नाउ यू वांट टू अपडेट योर रिटर्न, यू फाइंड आउट दैट देयर वाज सम अदर इनकम आल्सो, उसका रिफंड भी था, उसका टीडीएस भी था, सो लेट मी फाइल फॉर द रिफंड, not allowed. It cannot be increased. Now the question is results in refund. So does it mean that in original return my refund was 10 lakh rupees? Some income was left, I increased that income. Now after that income my refund remains reduced to 1 lakh rupees. Can I file as per the current provision? No, I cannot file. Though we have again suggested, in case the original return or revised return or belated return was filed and those were of refund, and in the updated return the refund is reduced, then the same should be allowed. But currently they, as per the current wordings of the proposed provision, it is not allowed. Further, in case there was a search or requisition under section 132 or 132A, or there was a survey under section 133A, or due to this search and survey there was a search or survey on the other person whose documents were found there, so these persons for that year they cannot file the updated return. If I file an original return, I can revise it. If I filed a revised return, I can still revise it within the due time. But once I have filed the updated return, I cannot revise it. Once an updated return is filed, full and final, you cannot update it further. And in case any proceeding is there for an assessment or reassessment or recomputation or revision which is pending or completed for that year, you cannot file an updated return. So a view is that, of course, section 148 proceedings, that is 147 proceedings or 143(2) proceedings. So in those cases also, 143(1) is not an assessment. 148A is not an proceedings, the pending proceedings, because 148A is just an inquiry. So in case 148A notice comes or 135A notice comes, you can update your return. But you cannot that, because that is not an assessment or reassessment. Yes, there has been various questions that what do you mean by assessment pending? So there were certain AARs where they said that this pending assessment that we talk about, is it about that own matter or something else? So this again would be clarified.
अगर मेरा असेसमेंट में किसी एक इशू के ऊपर पेंडिंग है और मेरा बाकी इशू के अंदर मैं अपडेट रिटर्न करना चाह रहा हूं तो कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, आज की डेट में नहीं कर सकते unless they clarify that it would be allowed. So let us see what goes in the final budgetary. If there is no change, then 143 to 147 you cannot update your return. अगर AO के पास कोई इंफॉर्मेशन है कोई फॉरेन इनकम की अंडर सेक्शन 90 या 90 है और उसको AO असेसी को कम्युनिकेट कर दी गई है, then he cannot. Information is there with the AO, but he has not communicated. You can file an updated return. Once he communicates to the assessee, thereafter, on that, for that year, the assessee cannot file an updated return. And similarly, in case of such information in relation to smugglers and foreign exchange manipulators, Forfeiture and Property Act, the Benami Property Transaction Act, the Money Laundering Act, the Black Money Act, if these have been communicated to him, then he cannot file an updated return. Otherwise, he can file that updated return. Or if any prosecution has been initiated before filing the updated return, for that year, he cannot file the updated return. Or any other matter, they can later on notify that in what cases updated return cannot be filed. Now, one of the another important points for the updated return is that मान लीजिए आप आज आपको एक नॉर्मल ओरिजिनल रिटर्न फाइल करनी है, रिवाइज्ड या बिलेटेड रिटर्न फाइल करनी है, तो यू कैन फाइल दैट विदाउट पेइंग द टैक्स. दैट वुड नॉट बी अ डिफेक्टिव रिटर्न. That would not be a defective return. But in case you are filing an updated return, you have to pay the tax in advance. If you don't pay, then it would be a defective return under 139(9). And the tax is not to be paid under 140A, but a new section 140B, which says that you have to pay the tax, interest, and additional tax. And in case you have not filed an original return, then the fee under section 234F, the fee for the delay is also to be paid before filing this updated return. And this additional tax, if we talk about, it is 25% of the tax and interest if the updated return is filed within 12 months, and 50% of the tax and interest if the ITR is filed within 12 to 24 months. However, please take care. Just one second. Just one. Hello. Namaste. आपको जो भेजे हैं सब वो भिजवाओ ना. हम मेल चेक करो, मेल चेक करो. हाँ जी. Sorry. However, if you are filing an updated return, please see that your time limit for the assessment under 143 extends to 9 months from the end of the relevant financial year in which the updated return was published. So, मेरा scrutiny cases के chances इस updated return के उसके हिसाब से हो सकते हैं. So, any questions on the updated return, please? Any questions on the updated return, please? Because this is one of the area where we will have to practice. So this updated return facility cannot be used for the cases where only disclosure, additional disclosures are there, unless until कि some income is increased. ना ऐसा कहीं नहीं है, कहीं restriction नहीं है. नहीं, but अगर मेरी additional tax liability नहीं आ रही होगी, तो in that case You will still file. There is no restriction. Okay. Only thing is कि आपका loss resultant updated return is not in loss, or refund should not be there. Yeah. It means कि disclosure can be done. Disclosure in what? ITR? Like
50 लाख से above पे आपको assets and liabilities का disclosure या shareholding का disclosures like that. Yes, yes. बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं. There is no restriction as of now. Okay. As of now. And practical मतलब exactly इसका benefit कितना निकलेगा, because ये जो additional income tax हमसे ले रहे हैं 25% and this, तो मतलब practically अगर है हमें client को guide करने के लिए, तो कितना ये useful हो सकता है उसके लिए. बहुत अच्छा प्रोपोजिशन है ना. आप देखिए, अगर मान लीजिए उनकी कोई इनकम छूट गई थी और वो बाद में स्क्रूटनी में आती है 148 में, 143(2) में, तो आपका टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी लगनी है, which would be much more than that. Here you are, I would say, a permanent VDIS. कि आप सिर्फ 25% की एडिशनल टैक्स इंटरेस्ट दे रहे हैं. आप देखिए ना कि now suppose there is a verification which is coming under section 148A, notice आया या 135A, आपको लगता है कि नहीं वो चीज हमारे से छूट गई या रह गई, फाइल एंड अपडेटेड. तो सर 148A का नोटिस अगर हमारे पास आ चुका है तब कर सकते हैं. दैट इज नॉट अ पेंडिंग प्रोसीडिंग ना. इन दैट केस तो प्रोसीडिंग स्टार्ट्स नहीं मानी जाती. ना ना ना, प्रोसीडिंग चालू होती है जब 148 का नोटिस आता है. ओके ओके ओके, ठीक है सर, थैंक यू. वो तो मतलब कि उनका तो कहना हम आपको 2 साल का टाइम दे रहे हैं, वरना थर्ड ईयर के अंदर 148 करेंगे हम. 2 साल का टाइम दे तो रहे, आप कर लो. हाँ फिर तो ठीक है, मैक्सिमम 50% पे आप अपना कर लो. हाँ, 25% 50% एसएससी की मर्जी है. क्योंकि भी कई बार क्या होता है, एसएससी थोड़ा सा ही प्ले स्मार्ट, वो कोई बैंक अकाउंट बताता नहीं, कुछ कोई ट्रांजैक्शन की है. आई वाज टॉकिंग एट समवेयर वेयर ही सेड दैट कैपिटल गेन हुआ, उसने डिस्क्लोज नहीं किया. बताया क्या कर सकते हो. बाद में वो सोचते हैं कि पता ही नहीं लगेगा डिपार्टमेंट को. ऐसा नहीं है, सब कुछ पता लग जाता है, सब कुछ पता लग जाता है. और इसमें हमें प्रैक्टिकली जो टाइम मिल रहा है वो 24 मंथ्स प्लस 3 मंथ वो गैप भी है अपना, जनवरी से मार्च वाला, तो इनफैक्ट ये 27 मंथ्स होगा. 3 महीने सोचने का मिल रहा है और उसके बाद आप कर सकते हैं एक तरह से फाइलिंग कर सकते हैं. वन टाइम कर सकते हैं अपडेटेड बार बार. तो सोच समझ के करना पड़ेगा. ठीक है सर, ठीक है. चलिए आगे चलते. A few clarifications and which are important ones. First of all, it is related to my education cess. अभी कुछ टाइम पहले भी मैंने एक आधे केस लॉस शेयर किए थे कि education cess is allowed under section 37 because it was not specifically mentioned to be part of income tax under section 40. Now they have clarified, added explanation 3 saying that income tax would include surcharge and cess and deemed to have always been included. So it was this change they have made from assessment year 2005-6. So जिसने भी education cess को खर्चे में लिया, expense में लिया, now in case their cases are under scrutiny, now the question would, or in the appeal, the question would shift from allowability or non-allowability to this provision being prospective or retrospective. Prospective है कि retrospective, क्योंकि अब तो ये क्लियर होगा कि नहीं, it is part of income tax, so it is not allowable. But the question would be, आज आया है, retrospective date से आया है, तो मेरा already मैं इसका claim ले चुका हूँ depending based on certain judgments. So whether it would be prospective or retrospective, the question वहाँ पे जाएगा, and of course that would be settled up to High Court or Supreme Court. Another change, I would say clarification, which is they have given section 14A. 14A, we know that in case any expenditure is made to earn the exempt income, that expenditure is disallowed. Then there were various cases which have been quoted into memorandum also, that in case there is an expenditure to earn the exempt income, it should be restricted to the extent of the income earned. And then there were cases where there were actually no income earned during the year. So there was no expenditure disallowed. Now they said no, that even if the income has not accrued or risen or received and the expenditure has been incurred, that shall
be deemed to be an expenditure would be disallowed. So it shall apply and shall deem to have been always applied in a case. So expenditure kya hai? For earning exempt income, whether earned or not, it would be disallowed. So setting aside plethora of the judgments. Now, अगर हम कहें आज की डेट में majority जो cases थे वो थे dividend से related, capital gain से related. अब तो सारे taxable हो गए. But still, so the usability of 14A seems to have shortened. Yet there are still certain exempt incomes like agricultural income, section 10 की बहुत सारी incomes हैं. तो उनसे related अगर कोई expenditure और आपने उसमें incur कर रखे हैं, that cases those expenditure would not be allowed as a deduction, right? Even though you have not earned that agriculture or the exempt income that way. And third one, again, a very important clarification. And again, because clarification which says that shall include and shall be deemed to have always included, what? That for the purpose of any expenditure for any purpose which is an offense or prohibited by law would not be allowed under section 37. Explanation 3 has been added. So three items they said. First, expenditure for any purpose which is an offense or prohibited by law in India or outside India. In India was already understood, but outside India was not covered. वैसे इंडिया के अंदर जो प्रोहिबिशन है उसको तो आप डिसअलाउ कर दो, इंडिया के बार-बार अलाउ करो. ये कहाँ है? लॉ इनफोर्स इन इंडिया ही होगा ना, तो इंडिया में मानते ही नहीं थे, आउटसाइड इंडिया लेते नहीं थे, तो आउटसाइड इंडिया कवर कर दिया. सेकंड वन, एंड व्हिच इज very important and which was done mainly for the, I would say, pharma companies. They say if any benefit or perquisite in whatever form is provided to a person who is carrying on the business or not, then if such acceptance of such benefit or perquisite is in violation of any law or rule or regulation or guideline, as the case may be, governing the conduct of such person, so it is not the law made by the parliament, state government or the central government, but even by the agencies, associations who are regulating, like in case of chartered accountant, ICI, in case of medical doctors and other medical persons, the Indian Medical Association. So if that is restricted there, it is the violation, in a violation of which the expenditure is made. For example, for doctors and others, the restriction is some amount limit, 3,000, something like that, beyond which you cannot give them the benefit. So if it is given more, so that also is deemed to be a prohibition by law, even though that law is not formulated by the central government or the state government. Yet by the governing association or council of conduct of that person would be treated to be law in such case, and that would be disallowed as an expenditure for that company. And third is that offense which is compounding of an offense which is in India or outside India. They have clarified that would not be allowed as a reduction. Any question on these 4 clarifications? अभी तक और कोई क्वेश्चन नहीं है? Great. Now this is a very, very important provision which they have brought in the regulation, and which they stated on 25th of June 2019 itself. They said that in the press statement giving the relief for COVID, where they made certain extensions, and they said that in case persons who are receiving certain amounts for treatment of the expenditure from the employer or from other persons, they would made exempt humanitarian grounds. So here, what they have now proposed in the regulation, first, that in case of an employer who is making a payment of any sum or reimbursing any expenditure which is actually incurred by the employee on his or his family on the medical treatment for any illness related to COVID-19,
will not be treated as a perquisite. It will not be a perquisite. So employer ने employee के खुद के COVID-19 से related illness या उसकी family से related illness पे expenditure reimburse किया employer ने. In that case, it will not be treated as a perquisite. So expenditure would be allowed in the hands of the employer, and in the hands of employee, it will not be taxable because that is not a perquisite. Now, in certain cases where there was no employer-employee relationship, yet the persons due to COVID-19 received various amounts. So that was, of course, taxable under section 56 to 10. So to cover that, in 56 to 10, they have made the amendment that any sum of money received by an individual for his or his family treatment, where the actual expenditure has actually been incurred by him, he receives from any person for the illness related to COVID-19, the whole of the sum would be not treated as an income. Kisi se bhi aaya, but for any expenditure actually incurred by him. So I have to be very careful. No capital building. पैसा आया, खर्चा कर दिया, खर्चा जितना नहीं किया, वो उसकी इनकम है, उसकी खुद की है, उसकी फैमिली को पैसा मिल रहा. एक्सपेंडिचर से ऊपर का कलेक्शन है, मान लीजिए 4 लाख का कलेक्शन हुआ और उसने खर्चा सिर्फ 2 लाख 3 लाख किया, तो बाकी 1 लाख रुपए का टैक्सेबल हो जाएगा. एंड इन केस द पर्सन हु हैड कोविड एंड ही एक्सपायर्ड and the money is received by his family for taking care of the family, in that case where the member of the family of the deceased person is receiving certain amounts from any person in relation to COVID-19, and the money is received within 12 months from the date of the death of this person, then in case the amount is received to any extent from the employer, the whole of the amount is exempt. In case it is received from other than employer, from any other person, and to the extent of 10 lakh rupees, it is exempt. Not beyond that. Not beyond that. Now, I have to be very, very careful. These are very emotional, touchy social issues. No one of us should ever do any, I would say, a thing which is not wherever integrity goes into a spin. No capital building, no hodgepodge, please. Treat this expenditure on the actual basis. Take these incomes or the amounts which have been received for the support of the family on an actual basis. Right? Of course, you will have to still prove section 68 in case the monies are received. These are exempt under this section. But section 68 still prevails. It still prevails. कि money आया है, 69A आया है, किससे आया है, उसकी identity credit worthiness तो चाहिए ही चाहिए होगी. And what do you mean by family? Family they have defined under explanation 1 to section 10(5), where they say the spouse and children of the individual and the parents, brothers and sisters of the individual or any of them wholly or mainly dependent on that individual. Lots of relationship not covered. For example, there is an employee and the employee himself, his wife, his son, they expire. And the left persons are son's wife or the grandchildren. So if they receive from the employer, they are not covered out here. So I have to be very careful into this. Though the suggestion has gone, but yet. And secondly, you have to ensure and tell them that the documentation should evidence that it was due to COVID-19. If the documents are not there evidencing it was COVID-19, it could create a problem. It would create a problem. And it could be any illness due to COVID-19. It could be that due to COVID-19, the person later on had a heart stroke, or there was a lungs failure, something like that, which was cured. An expenditure was incurred on that. But the documentation should say that it was due to COVID, not otherwise.
not otherwise. And in these times, there were various persons who were hesitant to put COVID-19 in their documentation due to various reasons. But yes, these are important provisions which I should know, because this is from 1st April 2020. Since the time the COVID-19 started. Any question on this COVID-19 relief? Yes, Sunil ji, the employer would get the deduction because this is due to employer-employee relationship. So he would get that deduction. Asha ji ka question hai, what will happen to cases where home treatment was done and mostly cash expense was incurred practically? First of all, that expenditure deduction is not there. For that expenditure, you had certain evidences and they were reimbursed by whom? Either the employer, or you received certain persons, money from certain persons and then you spent. So those evidences would be required. वो चाहिए होगा कि भाई एम्प्लॉयर ने पैसा हमने खर्चा किया और एम्प्लॉयर से रिइंबर्समेंट ले लिया और वो कोविड-19 का ही था, मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन है, कोई इशू नहीं. बिकॉज मोस्टली से प्राइवेट केसेस में उन्होंने एम्प्लॉयज को रीइंबर्स किया है, मतलब रीइंबर्स तो नहीं, एक लमसम अमाउंट दिया है कि आपका कोविड का एक बार पॉजिटिव आ गया तो उन्होंने लाइक 50,000 या 25,000 कुछ ऐसा पेमेंट कर दिया, तो बाकी सब ट्रीटमेंट हुई है घर पे. तो उसके अंदर वही है एविडेंस नहीं है ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड का रिइंबर्समेंट. सो ये एम्प्लॉयर के केस में, उसके टीडीएस के केस में चेक करना पड़ेगा कि आपको जो पैसा दिया वो आपका कोविड-19 से रिलेटेड था, उसके आप डॉक्यूमेंटेशन दीजिए, आपने कितना खर्चा किया. कैश में यही एक प्रॉब्लमेटिक है, करना एविडेंस. पड़ेगा, तो चाहे वो हर्ब्स थे, चाहे जो भी खरीदा, उनको लिख के तो देना ही पड़ेगा ना. यस. और प्रैक्टिकली क्या होता है आशा जी, वी हैव सीन सर्टेन केसेस वेयर in such cases there is no cash withdrawal at all. So from where the cash was incurred? You know, these issues we have seen. तो बेसिकली एज ऑफ नाउ देयर इज नथिंग लाइक कि आपका किसी हॉस्पिटल का कुछ लिखा हो या नर्सिंग होम का लिखा हो कि कितना एक्सपेंसेस, मतलब आप ओवरऑल कहीं पे भी आप एक्सपेंसेस रिलेटेड टू दिस यू कैन टेक इट एज एन एग्जाम्प्ट इनकम. अब कई उन्होंने तो लिखाया ही नहीं कोविड उनको 19 हुआ, लिखवाया ही नहीं कोविड हुआ उनको, तो फिर कैसे उसका रिइंबर्समेंट मिल जाएगा? That is also a case. So कोविड-19 का इसके अलावा प्रैक्टिकली जो आशा जी प्रैक्टिकली एक और इशू भी है कि बोलो क्योंकि प्रैक्टिकली एक इशू ये भी है कि कई जगहों पर रिलेटेड टू कोविड इश्यूज आए हैं बाद में, बट हॉस्पिटल ने उसको नहीं माना है कि वो कोविड से रिलेटेड है. कुछ नहीं कर सकते. ये एक मेजर इशू है. बिल्कुल सही कह रहे हैं. और उस वक्त तो ये इशू था या आज भी ये इशू है कि कोविड हो गया, कोई बताना नहीं चाहता. अब जब एक्सपेंडिचर रिइंबर्समेंट या ये सब की बात होगी तब कहेंगे नहीं जी कोविड ही था. ऐसे नहीं होता ना. अब बैकडेट में वो एविडेंस निकालेंगे. so the things changes, है ना. वो वाली बात है. But yes, we have to tell to the clients कि it is like this, all risk is yours if you still want to claim it that way, right? चलिए. Certain deductions, two deductions. One is ATCC D2, where employer, because अब तो government ने pension देना बंद कर दिया, तो वो pension की जगह now they are contributing to the NPS. So what happens, whatever money they contribute, they treat it as an income of the employee. And in case of central government, 14% of the contribution by the employer is allowed as a deduction. In case of other than central government, it is allowed 10%. So state government was covered under that 10%. कि भाई 10% ही आपको deduction मिलेगी. They said we should be treated at par with the central government के 14% allowed हो. So central government और state government दोनों को at par लिया है with a bottom assessment year 2021. Now state government employers also, if they are contributing 14% up to the extent of 14%,
the deduction would be allowed under section 80 CCD2. Second is under 80 DD, where for the person disabled, some annuity or a plan is taken by their dependents, the persons who are taking care of them, their family members. And the deduction is allowed to the extent of 75,000 rupees. And at the time of death of that person who was contributing, the money would go to the disabled person. And that case, the income, the money received by the disabled person was not treated as an income. Now they said that in case the money is received even when the person who was contributing is alive, but he has attained the age of 60 years, still if the money is received by the disabled person, that would not be treated as his income. So that is a proposed change. Now coming to VDA, one of the most talked about amendment out here. ये मैं सबसे पूछना चाहूंगा, ये VDA होता क्या है? ये होती VDA छोड़ो, आप ये बताएं क्रिप्टो करेंसी होती क्या है? In a layman's language, not technical language, ये क्रिप्टो करेंसी होती क्या है? What is this cryptocurrency? आई कहां से, क्या चीज होती है, कौन बनाता है, क्या कहानी है? Because we all need to understand this. It is very important for all of us, because in the coming times, all these things are going to happen. So if chartered accountants who are the financial doctors, they're not aware of these things, there would be a huge vacuum in the financial and taxation of these crypto assets, digital assets. So we all need to update ourselves on this. So what is the nature of these cryptocurrencies and other things? Anyone who can type. In layman language, if I can say कि something जो कि virtually available है, जो हम in exchange for anything, like अगर हम एक hard currency देते हैं और हम उसको virtually दे रहे हैं, जो actual में हमारे हाथ में नहीं है, मतलब और crypto word is because that is encrypted and उसको आप visually देख नहीं सकते हो, उसमें आप कुछ अपना मैनिपुलेट या कुछ ऑल्टरेशन नहीं कर सकते हो उसके अंदर, समथिंग लाइक। ये बनाता कौन है, क्या है, क्या नहीं, क्या आप भी चालू कर सकते हो? इसके लिए तो पूरा सिस्टम है, वो माइनिंग जो करते हैं अपने हाई पावर के कंप्यूटर सिस्टम्स एंड ऑल, उसको वो भी एक लिमिटेड है कि आप उसके ओवरऑल, जैसे अगर बिटकॉइन की बात करें कि ओवरऑल कितनी माइनिंग इसकी हो सकती है, आफ्टर दैट इट इज जस्ट एक्सचेंजिंग हैंड्स। आप अपनी क्रिप्टो करेंसी चालू कर सकते हो? आई थिंक यस, नॉट श्योर। देखिए, the government has not treated as a currency, वो उसको एसेट ही मानता है। तो करेंसी क्या है? अगर हम देखें पुराने टाइम में बार्टर सिस्टम होता था, जब कोई करेंसी होती ही नहीं थी, तो बार्टर में एक आइटम दूसरे आइटम से एक्सचेंज होता था, चाहे उसका वेरिएशन डिफरेंट होता, एक की जगह 4, एक की जगह 2, कुछ भी हो सकता था। गोल्ड के अगेंस्ट ज्यादा मिल जाता था, सिल्वर के अगेंस्ट और कम मिलता था, बट घिया की जगह तोरी मिल जाती थी, सब was that all possible? Then they started giving certain coins in exchange that आप आइटम टू आइटम के बजाय करेंसी चालू करें। अगर हम ध्यान करें, अगर हम दिल्ली में बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे जैसे मदर डेयरी है, तो मदर डेयरी में क्या होता है कि आप दूध लेने जाते हैं, मान लीजिए 54 रुपीज का 1 लीटर दूध है, आप 100 का नोट देते हैं, वो आपको 40 देता है, कहता है 6 रुपए खुले नहीं है, तो एक टोकन बना के दे देता है कि आप बाद में आ जाना, मैं इसको एक्सचेंज कर दूंगा, इसके अगेंस्ट आपको कर दूं। आपने कुछ दिन के आपके बहुत सारे टोकन इकट्ठे हो गए, फिर आपने दूध लेना बंद कर दिया। आपके पड़ोसी ने कहा, भाई आपने कहा मैं क्या करूं इसका, आपके पड़ोसी जा रहे थे, आपने उनको वो टोकन दे दिए, भैया ये पर्चियां आई है ले जाओ आप। वो वहां पे गया दूध वाले के यहाँ पे, उसने उसको इनकैश कर दिया, उसके अगेंस्ट दूध दे दिया। सो दिस वाज हिज प्राइवेट करेंसी व्हिच वाज एक्सेप्टेड बाय द यूजर्स ऑफ मदर डेयरी। इट वाज अ प्राइवेट करेंसी, गवर्नमेंट बैक नहीं है, कोई उसके अंडरलाइंग एसेट नहीं है, बट उसने कहा मैं एक्सेप्ट करूंगा, और सब लोगों ने कहा ठीक है हम भी एक्सेप्ट करेंगे।
ऐसा ही अगर हम बात करें तो पंजाब में हमारे एक स्पिरिचुअल गुरु थे, उन्होंने अपने पूरे एरिया के अंदर कॉइन्स बनाए थे अपने नाम के, और पूरा वो जो सिटी था वो सब उस कॉइन के अगेंस्ट में गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज करते थे. So it was again a private currency, no underlying asset, but everyone agreed. So this way the same, which was on a physical mode, these tokens. So certain people, we don't know who, they started this and they created through electronic encryptions and through various algorithms, which is you cannot feel in hand, but on a cloud basis, virtual basis, certain currency, which is they term as cryptocurrencies. Bitcoin was, I suppose, one of the first. And people started accepting it because the quantity was limited. So they put it on an exchange where people could trade into that, and the valuations of their coins went. The more and more acceptance, the more and more there was a demand supply gap, and the variation in that value of that coin was there. Underlying asset, none. Government backing, none. But people have started accepting it. तो मैं लेने को रेडी हूँ. जब मैं और तुम लेने को रेडी हैं, जैसे कि अभी हमने मदर डेयरी, जैसे हमने एक गुरुजी की बात की, तो जब एग्री कर जाते हैं तो that becomes a medium of exchange. So this is a cryptocurrency, private currency, which the government of India has not accepted, and they will be bringing their own digital currency. चाहे उसका कुछ भी नाम हो, लक्ष्मी, कुछ भी नाम. And this digital currency would change the system in which the transactions are taking place in India. Again, they don't need to print coins or notes. There would be no transaction costs. The economy, which we say is 5 trillion right now, it can go to 10 trillion, 20 trillion very easily. We have to just ensure that this digital currency is successful. And the more and more persons who start accepting those digital currency, whatever name is given by the government, RBI, the more and more economy would grow, and we all would be happy, because our profession grows only when the economy grows, when the people grow. So this would be a game changer, not 1 or 2 years or 3 years, but of course over 5-10 years, it could change the total system. But now what they have done, that they said, okay, whatever is legal or illegal, we are not questioning the legality or illegality. We are just saying if it is a VDA, virtual digital asset, whether it is a cryptocurrency or non-fungible tokens, NFTs, pay tax on the same. Pay tax on the same. And then they have brought in this section 115 BBH to tax the VDA. We term at cryptocurrency, they say virtual digital asset, non-fungible tokens from assessment year 23-24. And it provides for straightforward that yes, it would be taxed at the rate of 30% of the income of the VDA. And income here means sale consideration less cost of acquisition. No expenditure would be allowed. No loss would be allowed to be set off against any other income. Interhead, intrahead, nothing allowed. Such loss will not be allowed to be carried forward. Straightforward 30% tax. Right? And in case there is no other income, no 250,000 exemption, nothing, no rebate, nothing, tax need to be paid. And of course, virtual digital asset is defined under section 247A, which is quite huge and which may be changing on a regular basis because they have taken a power. Questions आते हैं कि ये जो मेरे मोबाइल के अंदर ये मेरे रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यूज करने के, ये मेरे जो फ्लाइंग के माइल्स होते हैं वो भी, वो सब वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, all these are. And then they have also said that gift of VDA is taxable under section 56 to 10, and for that they have
defined what is property other than immovable property. They said as per section 56(2)(7) and also includes VDA. Also includes VDA. So if it is taxable under 56(2)(10), the exemptions which are there in 56(2)(10) is also applicable. So for example, you receive it from your relative as defined under 56(2)(10), not taxable. You receive at the time of marriage, you receive at the time of death, will, all those things which are exempt out there, it would be exempt out here. It would be exempt out here. Otherwise, it is taxed at 30%, right? And definitions they have given, which is quite open, I would say, and it includes NFTs also, non-fungible tokens, or any other digital asset as the central government may notify. So suppose me add karte chale jaye. And to track these VDAs, they have introduced the TDS on this VDA, and section 194S has been inserted at the rate of 1% on the transfer at the time of payment or credit, whichever is earlier, and which would be there for the effect from 1st July 2022. And in case the consideration for the transfer of VDA is wholly in kind or in exchange of another VDA, and there is no cash, or the cash is not enough to cash is some part is cash, some is some in kind, but the cash is not enough to meet the tax TDS liability, then the payer will have to ensure that before taking that VDA, the person who is giving the VDA has paid the due tax. The tax has been paid before revealing the consideration. He has to ensure. Practically, those seems to be very, very tough. But yes, it is similar to 194B, 194R. Same provision, same wording. 194B, it is on the consideration. 194S, it is on the income. There is a difference. And computation of income is very tough as compared to computation of the consideration. So that problem is also there. Apart from this, if I talk about, in case of a specified persons, आपको 10 number लेने की जरूरत नहीं है. जैसे 194 IA में चलता है फॉर्म, 194 IB में चलता है, वैसे इसमें भी चलेगा. और 206 AB भी एप्लीकेबल नहीं है. बट स्पेसिफाइड पर्सन, ये स्पेसिफाइड पर्सन कौन है? ही इज एन इंडिविजुअल एन HUF, जिसकी कोई बिजनेस इनकम नहीं है. और अगर बिजनेस इनकम है तो बिजनेस से 1 करोड़ से नीचे की टर्नओवर होनी चाहिए, प्रोफेशन से 50 लाख से नीचे की होनी चाहिए. तो TDS काटने की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट्स क्या है? अगर मैं देखूं तो TDS तब काटना है अगर स्पेसिफाइड पर्सन डिडक्ट कर रहा है टैक्स, तो वो ट्रांजैक्शन 50,000 रुपए से ऊपर की होनी चाहिए, और अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन 10,000 रुपीज. इफ टैक्स इज डिडक्टेड अंडर 194S, तो और किसी सेक्शन में TDS नहीं कटेगा. और अगर 194O या 194S एप्लीकेबल हो रहा है तो 194S एप्लीकेबल होगा, O नहीं होगा. Tried and cover so many aspects of the VDA. Any questions on the VDA, please? Asha ji, question, will cashback or reward, because it is VDA as definition used generated, but cashback reward is not generated. It is if I talk about you अगर हम definition में जाएं, it is an information code token number generated through cryptographic means or otherwise. Because how it is generated, you spend something and then you get, providing a digital representation of value exchanged with the promise of or representation of having an inherent value, function as a store of value, unit of account,
including its used in any financial transactions or investment, but not limited to investment scheme. So they have tried and covered the huge area out there. Jyoti ji ka question hai whether loss due to trading of one cryptocurrency can be adjusted from another cryptocurrency. This was a question which we shared on the 1st of February itself in the evening when Girish sir and I were there. We were discussing. So it seems to be that it should be allowed, but currently the wording which they have done, it seems that it is not allowed. We have talked to CBDT and requested them to clarify. ये मेरे दो क्रिप्टो करेंसी है, एक में लॉस एक में गेन, दोनों में एडजस्टमेंट तो वो तो अलाउ होना चाहिए. अभी उनके हिसाब से नहीं है, but we hope that we have given them enough food for thought that at least within the same asset it should be allowed. So let us hope that when the final it becomes an act, it would be covered out there. आशा जी, कोई और क्वेश्चन आपका? This income will be taxable under the head capital gain. They have not specified under which head. So if you are doing a business, of course it would be under PGBP, no expenditure allowed. If you treat it as an investment, then capital gain, though it is not covered as an asset, capital asset. It is not under section 247, but they have 224, but otherwise it is. Then even if it is an other source, वो कहते हैं जो मर्जी हेड में करो टैक्स 30%, जिस मर्जी हेड में कर लो. तो ये कैशबैक और रिवॉर्ड को भी अगर इसमें इंक्लूड करेंगे तो ये टास्क तो उसको कंप्यूट करना विल बी. नाउ अब कैशबैक को हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली, व्हाट वी डू इज दैट वी क्रिएट दैट, बट देयर इज नो इनकम बिकॉज उसका इनहेरेंट वैल्यू चेंज नहीं होता. सो वी रिड्यूस फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द एसेट एक्सपेंडिचर दैट. बिजनेस बुक्स में तो आप इसको कर लोगे, बट आप अगर पर्सनल हेड में देखेंगे तो इतनी सारी चीजों पे वो कैशबैक लेते हैं. तो इशू ही नहीं है ना. अगर मेरा पर्सनल एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर कम हो गया. मान लीजिए मैं कहीं खाना खाने गया, मेरे को उसके अगेंस्ट मेरे को रिवॉर्ड पॉइंट मिले, तो मेरा 5,000 का मेरा बिल था, मेरे को 200 पॉइंट मिले, तो 4,800 की कॉस्ट हो गई ना. 200 मेरे पॉइंट आ गए. बट ये तो ये भी कह रहे हैं उसमें कोई एक्सपेंसेस अलाउ नहीं होगा, तो फिर उस कैशबैक को ये अलग सेपरेट ट्रीट करेंगे, क्योंकि इंडिविजुअल हैंड में अगर हम देखें तो वो कोई बिजनेस एक्सपेंसेस या ऐसा कुछ है नहीं कि मैंने अपने पर्सनल एक्सपेंसेस किए, कुछ आइटम ले लिया, कैशबैक मिल गया मुझे. पेटीएम पे मैंने जस्ट वो किया था, अपना ऐड किया, उसमें कैशबैक मिल गया. तो अब उस कैशबैक के जो मेरे रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं, मैं से देखा जाए मेरी कॉस्ट कम हो गई, पर वो मेरे को एक्स्ट्रा मिला, तो कॉस्ट तो मेरी नील है. When I exchange it, then it becomes my income. So I hope some clarity would be there on such reward points and etc. Otherwise, smaller amounts में बहुत इश्यू आएंगे. अभी तक तो ऐसे ही चल रहा है. अभी तक तो बिजनेस बुक्स में तो एक बार हो जाता है, फिर भी एक्सपेंसेस में नेट ऑफ, बट पर्सनल का तो कुछ नहीं है. So challenging things, because certain countries tax it as a PGBP, certain countries tax it as a capital gain. Here they have said that आप जिस मर्जी ऐड में करो टैक्स 30% दे दो. ठीक सर. Any other question on BDA? तो सर ये जो रिलायंस प्रेस वगैरह में कैश परचेज करते हैं, कैश से शॉपिंग करते हैं, तो वो मोबाइल नंबर मांगते हैं और वहां से वो पॉइंट्स भी दे देते हैं, तो वो सारे रिकॉर्ड हो जाएंगे. वो सर अब आज भी हो रहे हैं. हम लोगों को लगता है कि नहीं हो रहे, सब हो रहे हैं. अब सब हो रहे हैं सर. उनके पास डाटा इतना है कि अगर उसको वो प्रॉपरली यूज कर लेना बहुत आएगा सर. मतलब अगर कैश से परचेज करना है तो मोबाइल नंबर उनको प्रोवाइड ना करें, उसके बिना अब आपको देंगे नहीं. पकड़ तो लेंगे पूरी तरह से. हाँ अरे सर, आज की डेट में कितने लोग पेटीएम के थ्रू मनी ले रहे हैं, फोन पे के थ्रू पेमेंट ले रहे हैं, और सब दे रहे हैं, सब. हाँ. सो आज मतलब कि 1 मिनट लगेगा उनको इन्फॉर्मेशन लेने में. तो उन्होंने सारे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस को, सबके पास ईडी के
रेड हुई थी और सबने सारी इंफॉर्मेशन तो उनके पास आ चुकी है ऑलरेडी, उनको सिर्फ उस डाटा को यूज करना है बस। यस, एवरीथिंग इज नाउ देयर क्लियर। सर इसमें जो टीडीएस प्रोविजन इन्होंने किया है इंक्लूड, उसमें टीडीएस कौन करेगा? लाइक एग्जांपल के लिए जैसे क्रिप्टो करेंसी और इनके लिए वजीरेक्स या इस टाइप के प्लेटफॉर्म्स यूज होते हैं, वो एक्सचेंज विल बी रिस्पांसिबल। हाँ, अब आप ये समझ लो, मान लीजिए कि आपके पास एक गाड़ी है और मुकेश जी के पास वीडीए है। आपने कहा कि ठीक है जी, ये गाड़ी 5 लाख की है, मैं मुकेश जी को आपको देती हूँ। तो मुकेश जी ने कहा ठीक है, मैं इसके अगेंस्ट आपको 1 बिटकॉइन देता हूँ। हमने कहा ठीक है, डन। तो अब आप जब वो बिटकॉइन 1 लेंगे, उससे पहले आपको ये इंश्योर करना है कि मुकेश जी ने उस बिटकॉइन के गेन के ऊपर 30% टैक्स दे दिया। उसके बिना आप वो गाड़ी उनको नहीं दे सकते। बताएं। ये तो और गेन कितना है मुकेश जी, ये आप बताओगे और उनको आशा जी को मानना पड़ेगा। सो इट वुड बीच में प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म तो 1% टीडीएस काट लेगा। हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसको गेन पे टैक्स देना है, बट प्रैक्टिकली दैट वुड नॉट बी पॉसिबल, दैट वुड चेंज। बट इन केस ऑफ सच, बिकॉज दे हैव सेड इट इज नॉट अ करेंसी, बट इन एक्सचेंज ऑफ ए वीडियो आई कैन हैव अनदर एसेट ना। आज की डेट में तो कोई, और ये रेजिडेंट के लिए, नॉन रेजिडेंट के लिए तो 30% ही हो गया 195 में। सो अगेन यस, इवॉल्विंग लॉ, कुछ चेंजेस अभी आएंगे इसमें, उसको पूरा समझना पड़ेगा बात। जतिन जी का है, इंटरेस्ट अर्न ऑन क्रिप्टो, हाउ मच टैक्स शैल बी पेबल, फ्लैट 30% और नॉर्मल स्लैब रेट। जतिन जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर आप देखा जाए तो आज के भी न्यूज़पेपर में है कि you are talking about virtual digital asset, but income generated out of this VDA, I have given it on a loan and I get an interest thereon. So that is not covered out here. So that interest would be normal as of now. That would be a normal slab rate income. Yes, these issues were yet not covered in this VDA. So the transactions, there would be so many things which would be coming out due to this. Everything is going digital. तो पता ही नहीं क्या क्या नई चीजें और आएंगी, तो उनको कैसे टैक्स करना है. So it would be an ever evolving law. So that's why I request all my friends to get updated on these type of assets. All digital things we have to be very clear and applicable. TDS will be responsibility of the exchange. Yeah, it would be in case you are purchasing from the exchange, your liability would be deduct the TDS of the exchange, and in case you are selling, the exchange would deduct your TDS. रिटर्न है, क्योंकि आप जिसको भी जिससे भी जो वीडियो ले रहा है, उसकी जिम्मेवारी है 1% TDS काटने की. ये तो लिखा है ना कि anyone responsible for paying VDA, then before making such transfer, at the time of payment or credit, whichever is earlier, he has to deduct TDS at the rate of 1%. So if I am purchasing the VDA from WazirX, so I'll deduct his TDS. I am selling to it, WazirX would deduct my TDS. I don't know how that would happen. Jatin ji, इनको allow करो, Jatin ji को. It would be very tough. I understand fully, because it goes into within seconds multiple transactions. Jatin ji, you can unmute yourself. Hello. हाँ जी, जतिन जी बोलिए. Sir, namaste sir. नमस्ते. Sir, this will be a very fruitful discussion for 2 minutes. I am guaranteeing on that, right? Yeah. Okay. Sir, इंटरेस्ट का आपने बता दिया कि भाई थोड़ा डाउटफुल हो सकता है, राइट? कि भाई नॉर्मल में जाएगा, फ्लैट 30% में जाएगा. थैंक यू सर. अब सर मेरा कंसर्न है
कि उसमें बस ये लिखा है कि जो भी परचेजर है उसको 1% टीडीएस डिडक्ट करना है, राइट। अब परचेजर तो जतिन जिंदल परचेज कर रहा है मिस्टर ए से, बाइनेंस तो बस एक फैसिलिटेटर है। उसमें जैसे मान लो एग्रीगेटर के केस में स्पेसिफिकली रिटर्न होता है कि एग्रीगेटर विल डिडक्ट द टीडीएस ओला उबेर के केस में, राइट। वो 194 ओ में कवर्ड है, राइट। राइट, बट यहाँ पे तो ऐसा लिखा नहीं कि एग्रीगेटर करेगा। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जिससे भी आप ले रहे हो, यहाँ मैं एक्सचेंज से ले रहा हूँ। नहीं सर, सॉरी, अगर आप देखें 195 के अंदर भी मेंशन नहीं है स्पेसिफिकली, बट व्हेन यू सेल एनी शेयर्स ऑफ ए नॉन रेजिडेंट, that broker who is making the payment, he is required to deduct the TDS in case of sale of securities of a non-resident. है ना 195 में, वो भी एक्सचेंज के थ्रू होता है सारा, BSE NSC। ठीक है सर, ठीक है, डन सर। तो सेम वे इट विल मूव अराउंड। ऑब्वियसली सर आपको ज्यादा एक्सपीरियंस है तो हम आपकी बात ही मानेंगे। नहीं, I know it would be very tough. It would be very tough to implement, and challenges would be there. That who are all the brokers of the Wazirex or some such exchanges, but yes, their responsibility would be there. Their responsibility. ओके सर, एक छोटी सी चीज हो रहा है, बोलो ना। मैंने 31 मार्च से पहले पहले अपना क्रिप्टो सेल कर दिया, राइट। राइट, और वो लॉन्ग टर्म था। बिल्कुल। right? अब तो मैं उस पे प्रॉपर्टी परचेज करके क्लेम कर सकता हूँ सर, सेक्शन 54। अगर लॉन्ग टर्म है, नहीं 54 नहीं मिलेगा, 54F मिलेगा अगर लॉन्ग टर्म है। हाँ सॉरी सर, 54F अगर लॉन्ग टर्म है तो। यस, ओके, और 31 मार्च के बाद सेल करूंगा तो नहीं मिलेगा? तो नहीं मिलेगा। ठीक है। और सर अगर मेरी क्रिप्टो पहले की परचेज है, मतलब लेट्स से 2015 में खरीदी थी, एग्जांपल कह रहा हूँ मैं, 2015 में खरीदी थी, और चाहे उसे मैं 31 मार्च के बाद बेचूं तब भी मैं 54F का बेनिफिट क्लेम नहीं कर पाऊंगा। यू आर राइट। ओके, ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर फॉर एनलाइटमेंट। थैंक यू। गुड जतिन जी। तो अब ये भी बता देना जतिन जी, कितने क्रिप्टो आपके पास यार? सर बस नहीं ठीक है यार, मतलब थैंक यू सो मच सर। लाइटर साइड भाई, लाइटर साइड। चलिए, but yes, these are evolving, so I'll request all my friends that they should be fully aware of these things. You know, they have to be fully aware of these things because these are initial। अभी समझ लेंगे तो बेटर रहेगा, आने वाले टाइम में और नए नए एसेट्स आएंगे। So digitization, all what is this, we have to be very constructive because ultimately we'll have to give this services to our clients who are already dealing into this, and many youngsters are already there. Yes, certain seniors are also there who are full time into investment, other things, but yes, it would be our duty. Now going ahead, certain other tedious provisions, and one of them is again very important to understand, 194IA. Very important to understand. This we all know, it is on TDS on immovable property if the consideration for the property is there for more than 50 lakhs. And the amendment what they have made is that 1% TDS would be there on the sum which is paid or credited, or the stamp duty value, whichever is higher. This they have done it now with effect from 1st April 22. So if I talk about, please understand कि आपकी मान लीजिए एक प्रॉपर्टी है जिसकी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है दैट इज 1 करोड़, आपका कंसिडरेशन जो है दैट इज कंसिडरेशन इज योर 70 lakhs। अभी टीडीएस डिडक्ट होता है 70 पे, अब होगा कि 1 करोड़ पे आपने टीडीएस डिडक्ट करना है। So what will happen in your AIS, TIS, I would say, your transaction value would be 1 crore. So this 30 lakhs difference addition could be made by CPC, or they can ask for the scrutiny case is quite, I mean, what is currently happening, that people in the ITR are putting the stamp duty value also 70 lakhs, transaction value also 70 lakhs. Secondly, there is a provision under 50C and 56 to 10 to give the 10% rebate of the stamp duty value. Here they say stamp duty value, ये 10% का benefit कहाँ गया मेरा?
जो मेरे को सेक्शन 50C कहता है, वो कहता है टीडीएस तो आप पूरे पे काटो. So various property dealers, they still say, and clients don't come to us in advance, they still say कि भाई आप तो स्टैम्प ड्यूटी के ऊपर आपने स्टैम्प ड्यूटी तो पूरी दे दी, लेकिन कंसिडरेशन 70 लाख आपका इनकम टैक्स 70 लाख ही माना जाएगा. हालांकि नाउ लॉट मेनी पीपल हैव अंडरस्टूड दिस, बट स्टिल दे से टीडीएस 1% और वो इनकम टैक्स में ये 70 लाख ही दिखा रहे थे. नाउ दिस वुड बी अ बिगर इशू. नाउ हमारे पास क्लाइंट पहले नहीं आते, लेकिन जब वो 194 आईए में परचेजर हैं तब तो आएंगे आपके पास. जब परचेजर आएगा तब उसको जरूर बोलिए कि भैया कंसिडरेशन क्या है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या है. स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पे टीडीएस कटेगा चाहे आपका कंसिडरेशन लोअर है. नाउ द प्रॉब्लम व्हिच वी टोल्ड टू सीबीडीटी आल्सो दैट देयर इज अ प्रोविजन अंडर 50C2 which says that if my actual price is less than the stamp duty value, then I should be allowed to contest before the AO. Where is that right now? The right is gone. My TDS would be on the whole percent, whole stamp duty value. So this problem would be there. So please tell the clients, yes, transaction kare, stamp duty value se niche na kare. This would be a problem. Any question on this 194 IA? चलिए 194 आई में क्वेश्चन नहीं है, बट प्लीज बी केयरफुल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड सेकंड 206 AB. 206 AB के अंदर सबको पता है ये नॉन फाइलर्स ऑफ ITI 2 ITRs हैं, 2 years ऑफ ITRs. उसके अंदर डबल रेट ऑफ टीडीएस कटता है. यहाँ पर उन्होंने 194M ऑलरेडी एक्सक्लूड किया हुआ था, 194 IA IB एंड MB एक्सक्लूड कर दिया कि इनके ऊपर अब आपका हायर रेट नहीं कटेगा. You don't need to see whether 2 years ITR has been filed. Of course, we don't see on a case-to-case basis. We go to the reporting portal, and from the reporting portal, we register ourselves as a principal officer, and then we put that PAN number and get whether it is covered under 206 AB or 206 CCA or not. Second amendment which they have done is that instead of 2 years of non-filing of ITR, they say अगर 1 साल की भी ITR फाइल नहीं की, अगले साल डबल रेट ऑफ टीडीएस. तो अगर मैंने ओरिजिनल फाइल नहीं की और मैं 206 AB में कर लूं 50,000 से ऊपर का टीडीएस TCS है, अपडेटेड रिटर्न तो मैं 1 साल बाद फाइल करूंगा, बट मेरा टीडीएस अगले सालों में डबल रेट पे डिडक्ट होना चालू हो जाएगा. होगा कि नहीं होगा, मेरे को जो डिडक्ट करना है वो डबल रेट पे करना है अगर मैं डिडक्टर हूं तो. सो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल इनटू दिस. And third change in TDS, again, one of the very controversial, and how to implement that is 194R. Introduced with effect from 1st April 22 कि अगर कोई भी पर्सन किसी रेजिडेंट को बेनिफिट या परक्विजिट देता है, whether convertible into money or not, arising out of business or profession, then in such case, before providing such benefit or perquisite, TDS at the rate of 10%. 194S में payment or credit whichever is earlier था. यहाँ पे before providing such benefit, TDS at the rate of 10%, and if value or aggregate of the value exceeds 20,000 rupees per person per financial year, and in case if it is in kind, again the payer will have to ensure that the tax is paid before releasing that benefit, just like in 194B. मान लीजिए लोगों के पास बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वाइट गुड्स के, फार्मा के, सीमेंट के, बहुत सारे आइटम्स के, जो कि गाड़ियां देते हैं, सोने की गिन्नियां देते हैं, एलईडीज देते हैं, रेफ्रिजरेटर्स देते हैं. इतना टारगेट आपका आ गया डीलर को प्रमोट करने के लिए. वो तो कंपनीज तो जो देती हैं वो अपने एक्सपेंडिचर में ले लेती हैं, बट जो रिसीव करता है वो कहीं दिखाता ही नहीं. नाउ व्हेन दे आर मेकिंग सच बेनिफिट्स और परक्विजिट, द टैक्स वुड बी देयर, टीडीएस वुड बी देयर एट द रेट ऑफ 10%, क्योंकि वो तो जो अमाउंट था वो उनके हाथ में ऑलरेडी सेक्शन 28 के अंदर टैक्सेबल था और वो दिखाते कोई नहीं.
दिखाते कोई नहीं थे. So now this 194R is again creating ripples. जैसे मेरे कुछ लोगों से बात हुई, वो कहते ठीक है हम तो डिडक्ट कर लेंगे. जैसे मैं कहते हम तो गोल्ड कॉइन देते हैं, तो मान लीजिए वो कहते हैं जो गोल्ड कॉइन हमारा 35,000 का है, तो हम कहेंगे जी आपकी स्कीम का जो हो गया दैट वुड बी 38,500. हम उसका 10% हम एक सोने की गिन्नी दे देंगे 35,000 की, और 3,500 उसका टीडीएस डिडक्ट कर लेंगे. Whatever the value comes, whatever the value comes. So and then give them the letter कि इतनी आपकी वैल्यू है, आप वैल्यू सिर्फ सोने की गिनने की नहीं, आप इतने अमाउंट दिखाइए, उसका टीडीएस रिटर्न जाएगा. So they were saying huge amounts जाएंगे, huge details जाएंगे. So again huge amounts of another ITRs would be there. Any questions on this, please? Nanji Mukesh, any questions? No sir. Because ये तो बहुत बड़ा एक चेंजिंग इशू हो जाएगा इसमें. Yes sir. हाँ जी आशा जी, कोई क्वेश्चन? स्पेशली जो इंडिविजुअल के केसेस में हमें पहले नहीं पता लगती थी कि उनको क्या क्या मिला, अब टीडीएस के जरिए पता लग जाएंगे. स्पेशली वो सीमेंट के जो उनकी एजेंसी है, वो सब खूब उनके टूर एंड ट्रैवल काफी चलते हैं, बट कहीं भी वो इनकम में नहीं आती थी. ये उनके लिए एंड एक काम और बढ़ेगा एज एन ऑडिटर भी, आपके जो भी एक्सपेंसेस बुक्ड हैं वो देखने पड़ेंगे. वो एक्सपेंसेस एग्जैक्टली किस एम्प्लॉय पे डाला उन्होंने उसे, अरे एम्प्लॉय पे या किसी भी और एजेंट पे. उसमें इशू क्या होता है साथ साथ कि वो कई लोग कहते हैं कि जिनको हम सोने की गिन्नियां देते हैं उनका तो टीडीएस काट ही नहीं सकते. जिनको एक्चुअली देते हैं वो अपना पैन नंबर थोड़ी दे देंगे. Most of those persons are, we all know that they are somewhere else. So again, but yes सर उस केस में तो क्या करेंगे? देना बंद करेंगे या क्या करेंगे? उनको बोलेंगे भाई क्या करेंगे? रियली क्लाइंट यही बोलने वाला है कि आप बताओ हम क्या करें, क्योंकि हमें तो ये देना है इंसेंटिव, वो पैन नंबर नहीं दे रहा. तो 30% उनका जो एक्सपेंडिचर है वो एड बैक हो जाएगा. एक तो 30% तो है ही है, प्लस टीडीएस नहीं काटने की उसका पेनल्टी वगैरह वो अलग है. हाँ, हम क्या कर सकते हैं? yes. भाई किसको दिया ये तो बताना ही पड़ेगा ना. 20,000 रुपए से ऊपर. Exactly. तो आप डायरी पेन पेंसिल बांटो, कोई मना ही नहीं है. But yes, smart change I would say, and good one. Yes. ठीक है, अगर हम ये सोचे तो कंट्री का भी फायदा है, प्रोफेशनल्स का तो फायदा ही है, कोई नुकसान है नहीं. It's a good provision. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को तो कोई इतने अमाउंट का देता ही नहीं है. सही में. गोल्ड कॉइन कहाँ मिलता है सर हमें? सिल्वर भी सर फीस टाइम पर दे दे या एडवांस में दे दे ना, दैट इज द गोल्ड कॉइन और सिल्वर कॉइन. फीस दे दे बस समय पे. राइट. पूरा दे दे, उसमें काट ना करे. हाँ. सर बिल इशू करने के बाद बोलते हैं इतने पे मान जाओ. Which is wrong. We have to change that. Coming into another very important provision, assessment and appeals, and the first point, very very important, section 68 amendment. अभी तक हमारा सोर्स ऑफ सोर्स चाहिए था शेयर कैपिटल पे. अब कहते हैं लोन और बोरिंग और एनी सच अमाउंट. मान लीजिए कि मुकेश जी आपको वैसे जरूरत नहीं है पैसे की, पर मान लीजिए जरूरत पड़ गई और आपने सब जगह गए, सब जगह बात की और किसी ने आपको पैसे नहीं दिए. आपको उस वक्त बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है लोन की अपने प्रोफेशन के लिए. तो आशा जी रेडी हो गई, तो ठीक है मैं दे देती हूँ, मेरे पास है. तो आप कहेंगे अच्छा आशा जी 1 मिनट देने से पहले बताओ कि आपके पास कहाँ से आए. फिर बताओ अगर वो बोलेंगे जी मेरे को कहीं और से आएगा तो उसका भी सोर्स बताओ. आशा जी कहेंगे मैं क्यों सोर्स बताऊं, मैं नहीं दे रही लोन. तो जिससे मेरे को लोन लेना है उसका मैं सोर्स पूछूंगा तो वैसे मेरे को कैसे मिलेगा? Even the banks and NBFCs are not exempt. NBFC में जाऊंगा बोलूंगा जी अपना सोर्स दो मेरे को, वो मेरे को सोर्स देंगे. मेरे को कैसे देंगे? और इंटेंशन इनका यह था कि यस एंट्रीज होती हैं इसमें, और फैक्ट तो ये है चाहे कोई माने नहीं माने, जहां एंट्रीज होंगी वहां तो सोर्स भी मिल जाएगा, सोर्स का सोर्स भी मिल जाएगा. जहां जेन्युइन होगा वहां पे वो देने में आना करेगा.
Now, this would be a big problem for the genuine borrowers. And or any such amount, if I take the color, it is on loan or borrowings only. I hope that they don't cover gift sales, क्योंकि जितनी एडिशन इन्होंने की है अभी डिमोनेटाइजेशन पीरियड में, सारी सेल्स के ऊपर की है, बोगस सेल्स 68 में एडिशन। इनकम में ऑलरेडी कहते नहीं जी आपका नॉर्मल मिनिमम तो 68 में करके उसको 78% टैक्स लेंगे। सोर्स कहां से बताएंगे सेल्स का? मतलब कि कोई आपके शॉप पे ऊपर आएगा, एक कोई भी चीज खरीदने, एक पेन खरीदने के लिए आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, लाओ भी कहां से पैसे लाए खरीदने के लिए, ऐसे थोड़ी पॉसिबल। So I hope that gift and sales, of course, they would not be covered. Of course, गिफ्ट के केस में तो सोर्स चाहिए, सेल्स के केस में सोर्स भी नहीं चाहिए आज की डेट में। एंड लोन और बोरिंग्स में सोर्स का सोर्स, it could be a very, very big issue for the genuine borrowers. I'm telling you, for the genuine borrowers. Any comments of any of the members out here? हाँ जी, मुकेश जी, आशा जी, कोई और? ज्योति जी, जतिन जी, सुनील जी, anyone? Because this is going to create a big problem. जिससे लोन लेना वो अपना सोर्स कहाँ बताएगा? ये बिल्कुल ठीक बात है सर, और जो आपने अभी बात कही वो भी ठीक है कि जो जिसके लिए ये लेके आए हैं वो एंट्रीज वालों के लिए, वो अगेन अपना ट्रैक निकाल के और कर लेंगे काम को। जेन्युइन वाले ही फिर फंसेंगे इसमें। उन केस में तो मिल ही जाएगा सोर्स का सोर्स भी। जेन्युइन में कोई देना नहीं चाहेगा ना, कहते मैं क्यों दूं, पैसा चाहिए या तुम्हारे को डॉक्यूमेंट। एक अपर क्वेश्चन पूछते ही फिर हो जाता है कि जी तुम रहने ही दो, जरूरत नहीं है देने की, तुम्हें कौन फंसेगा। That's true. So it would be a big problem, what I feel. Right? Further प्रोसीजर चेंज किया फेसलेस असेसमेंट का। पहले वो एक यूनिट के पास जाता था असेसमेंट यूनिट, फिर दूसरे में, अब वो उन्होंने कहा सेम एयू के पास जाएगा। सेकेंडली उन्होंने कहा ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर नहीं कहता, शो कॉज नोटिस वुड सफाइस। थर्ड एक वो था कि उसके अंदर की अगर वो प्रोसीजर फॉलो नहीं किया तो ऑर्डर वुड बी ट्रीटेड एज नॉन एस्ट। तो बोले वो लाइन हटा दी, कहते ठीक है नॉन एस्ट तो नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर हम नॉर्मल देखें प्रोसीजर दिया उसको फॉलो नहीं किया तो इन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस वी कैन स्टिल चैलेंज दैट। So yes, कुछ प्रोसीजर्स चेंज किए हैं which would be effective when this budget is converted into the act. But yes, 170 में चेंज किया which is good one again, कि मेरी कंपनीज मर्ज हो रही हैं, डिमर्ज हो रही हैं, तो प्रीडिसेसर के ऊपर कोई केस चल रहा था, so that would continue on the successor, या कोई डिमांड निकली है वो सक्सेसर पे डीम मानी जाएगी, कंप्लीटेड पेंडिंग जो भी है, which is quite fair, which is quite reasonable. Second, which was again there was a lot of problem and no clarity how to give it, again in relation to this business reorganization, the mergers, demergers and all those things, क्योंकि इफेक्टिव डेट और अपॉइंटेड डेट में डिफरेंस होता है 1-2 साल का, और आपको रिवाइज रिटर्न फाइल करनी पड़ती है फ्रॉम द अपॉइंटेड डेट। मान लीजिए आपने अपॉइंटेड डेट ली 1 अप्रैल 2020 और आपका इफेक्ट आया उसका जाके 1 अप्रैल 2023 में, तो 20-21 और 21-22 और 22-23 उन तीनों साल का आपको करना पड़ता था, व्हाट डू यू से, तीनों साल का आपको रिवाइज रिटर्न फाइल करनी पड़ती थी कंसोलिडेटेड। तो करते क्या थे, एओ के पास फिजिकली फाइल करते थे। नाउ दे से दैट दे वुड क्रिएट a return which would be a modified return in such cases of business reorganization, and they say this can be filed within 6 months from the end of the month in which the order is passed. I made a suggestion to them that it should not be from the date of order passed, but it should be from the effective date, the month in which the effective date lies, because effective date or date of order के अंदर ही 3-4-5 महीने निकल जाते हैं कई बार, right? So one has to be very careful that yes, this modified return, now the provision would be in place. Then comes again my 148A, where the scope has increased to a great extent. पहला 148 के अंदर उन्होंने कहा, एक्चुअली 148 और 148A में बहुत सारे अप्रूवल्स की रिक्वायरमेंट थी,
148A में केस लेना है तो पहले आप अप्रूवल लो, फिर उसका डिसीजन करना है, फिर आप अप्रूवल लो, फिर उसके बाद 148 में उसकी अप्रूवल लो। उन्होंने कहा नहीं, अगर 148A में अप्रूवल लेने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि 148 शुड बी इशूड, तो दोबारा अप्रूवल लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। देन 148 कब इशू हो सकता है कि जब उसके पास इंफॉर्मेशन हो, एक तो थ्रू दिस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर उसके थ्रू, या फिर उनके पास जो पहले लॉ था वो ये था कि देयर इज अ फाइनल audit objection by the CAG. Now they have, instead of that final audit objection of CAG, they said any audit objection that the assessment has not been made in accordance with the provision of the act, और extend किया उसको कि अगर उनके पास कोई information है of an foreign income under section 1990A, जो information मिलती है उस केस में, या फिर उनको ये information made available होती है by AO through the scheme, the e-verification scheme, which is under section 135A. This is a new scheme which has been notified on 13th December 2021, जिसमें कि आपको जो 133 के नोटिस आते हैं, 133B, 133C, इन सबके जो आते हैं नोटिस 135 के मिला के, उसका रिप्लाई भी आपको प्रॉपरली देना पड़ेगा आप, क्योंकि इस ई वेरिफिकेशन स्कीम के अंदर आपको जो नोटिस आए, आपने उसका ऑनलाइन रिप्लाई देना है। अगर आप नहीं देते या सेटिस्फेक्शन में नहीं देते तो 148A का नोटिस नहीं आएगा, सीधा 148 का नोटिस आएगा, मीनिंग देयर बाय कि 148A कम होंगे, 135A ज्यादा होंगे। आपने अगर ये सोचा था कि यस मेरे को हर काम की फीस लेनी है, वो तो मैं कहता ही रहता हूं हमेशा, तो आपको सिर्फ 148A के नोटिस की फीस नहीं, 135A के नोटिस की भी फीस प्रॉपर लेनी है। डोंट ट्रीट दिस इंफॉर्मेशन सॉर्ट एज वेरी लाइट, ऑन अ वेरी लाइट मोड। ट्रीट दैट अगर आपने इसको सही तरह से इंफॉर्मेशन नहीं दी तो आपका 148 आएगा ही आएगा। And the last which they have added is कि if any information which requires action in consequence to the order of a tribunal or a court, ITT या कोर्ट्स के आके, तो हालांकि इसमें भी क्लैरिफिकेशन इतना नहीं है कि असेसी के केस में किसी और के केस की वजह से मेरा केस भी खुल जाएगा, ये इंफॉर्मेशन मानी जाएगी। दिस वुड बी वेरी ड्रैकोनियन, बट यस 148 इसमें से आ जाएगा। और मेरे को पता है कि 148, आपको सबको पता है कि 148 का जब केस खुलना था 3 साल के केस खुलने थे, बट मान लीजिए वो 3 साल से 10 साल का एक्सटेंशन हो सकता था कि अगर कोई मेरे पास एओ के पास एविडेंस हो एसेट का 50 लाख रुपीस और मोर, और वहां लिखा था 3 साल के खुलेंगे, तो वो 3 साल का जो पीरियड था वो उसमें से वहां पे हटा दिया। एंड सर्वे एंड सर्च दे कैन बी रीओपन फ्रॉम 3 to 10 years, और 3 से 10 साल तक वो जब खोलेंगे, देन दे हैव टू सी दैट जो 10 years की लिमिट है, दैट इज फॉर इनकम टैक्स ऑफ 50 लाख और रुपीस फॉर मोर। पहले सिर्फ एसेट था, अब उन्होंने कहा एसेट, एनी एक्सपेंडिचर फॉर अ ट्रांजैक्शन, इवेंट और ओकेजन, और एनी जर्नल एंट्रीज, कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ ऐड कर दिया। 50 लाख रुपए से ऊपर कुछ भी होगा तो 10 साल तक के केस खुल सकते हैं। मोस्टली दिस वुड बी थ्रू सर्च एंड सीजर्स, मोस्टली इट वुड बी should be through search and seizures। लेकिन वो अगर दूसरी इंफॉर्मेशन में भी 50 लाख से ऊपर के जर्नल एंट्रीज का आ गया, then there could be an issues। एंड ये एसेट और एक्सपेंडिचर जो है वो एग्रीगेट में देखना है। मान लीजिए आपका एक साल में 10 लाख है, दूसरे साल में 12 लाख है, तो 4-5 साल मिला के 50 लाख हो गया खर्चा, ये एसेट क्रिएट की, तो वो 5 साल के नोटिस आ जाएंगे। अप टू 10 years, 3 to 10 years, एनीथिंग 10 साल तक के एग्रीगेट में 50 लाख रुपए से ऊपर, बट जर्नल एंट्रीज ओनली ईयर वाइज, उसको एग्रीगेट नहीं करेंगे, स्पेसिफिक ईयर ओनली, राइट। एंड देन 10 साल तक का केस खुलना था, एक्सपेंडिचर को उनको इंक्लूड कर लिया, तो सर्वे में से 135A का एक्सेप्शन उन्होंने बाहर निकाल दिया कि उसको इंफॉर्मेशन मानेंगे, यानी कि इसको भी इंफॉर्मेशन मानेंगे। पहले एक्सेप्शन में था, अब उसको एक्सेप्शन में नहीं लिया, क्योंकि मेरे को 10 साल तक के केस में एक्सपेंडिचर को कवर कर लिया उन्होंने।
देन अगेन एज आई सेड, अगर 135A का इंफॉर्मेशन है तो 148 एप्लीकेबल नहीं होगा, जैसे मैंने आपको भी बताया। तो नोटिस या तो इसमें आएगा 135A में या 148A में, दोनों में नहीं आएगा। एक बार यहाँ पे वेरिफिकेशन कर ली तो कहते दोबारा यहाँ नहीं करना, यहाँ आपको एक बार अपॉर्चुनिटी दे तो दी, so why to double it? So take both the notices very very seriously. और जो मेरे 153D में था कि आपको प्रायर अप्रूवल लेनी इन द केस ऑफ सर्च एंड सर्विस, तो यस एडिशनल कमिश्नर जॉइंट कमिश्नर की, तो इन दैट केस still required prior approval of the additional commissioner or the joint commissioner. Any questions in 148, 148A, 149? Any questions on this? Chani. Nahi, thank you. Now coming to trust and institutions. और इन्होंने इस बार अगर हम देखें तो बजट में मेमोरेंडम में ह्यूज चेंजेस हैव बीन मेड इन ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूशंस, और मुझे लगता है कि आफ्टर द मेकिंग ऑफ दिस फाइनेंस एक्ट द होल ट्रस्ट थिंग्स विल हैव टू बी अंडरस्टूड अगेन, बट द क्रक्स देयर ऑफ इज दैट दोनों सेक्शंस को स्क्रिंकोनाइज किया। सेक्शन 1023C 4, 5, 6 एंड 6A, जिसको फर्स्ट रिजाइम बोलते हैं क्योंकि सेक्शन 10 पहले आता है, एंड 11, 12 सेकेंड रिजाइन, दोनों को पार पे ले आए। जो दोनों में एक में था, जैसे मान लीजिए कि सेक्शन 12 में था कि अगर आपने 85% खर्चा नहीं किया तो आप यू कैन सेट अपार्ट सर्टेन अमाउंट अंडर 11(2) और 5 years, उसके लिए फॉर्म 10 फाइल करना पड़ता था, एंड इन 6th year it was taxable, है ना। सो उसके लिए फॉर्म 10 भी फाइल करना पड़ता था। एक सेकंड प्लीज। हेलो, कौन? हाँ, राइट। एंड by what? By ensuring their effective monitoring and implementation, by bringing consistency in provisions of both the regimes, और कुछ clarity लेके आया taxation की। And I will talking about major things। उन्होंने कहा था कि अगर हम section 12 देखें तो अगर कहते हैं कि without giving effect to section 12, if my total income is exceeding 11 and 12, my income is exceeding the maximum amount not chargeable to tax, which is 2.5 lakhs, then you have to get the audit done। तो कहते हैं audit done तो ठीक है, हमने लिखा कहाँ एक्ट में कि बुक्स भी मेंटेन करनी है, तो उन्होंने कहा कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड व्हिच दे विल प्रिस्क्राइब। अभी तक बिजनेस में की नहीं है, बट यस बुक्स वुड बी प्रिस्क्राइब, जो भी उनको बोलेंगे उसके हिसाब से। देन ये 115 TDTETF व्हिच वाज फॉर द टैक्सेशन ऑफ अक्रीडेड इनकम, वो 12A को एप्लीकेबल था, 1023C उसमें नहीं था, तो 1023C को भी ऐड कर दिया कि अगर ये चैरिटेबल से नॉन चैरिटेबल होंगे तो उनका टैक्सेशन 115 TD के हिसाब से होगा। ये चैरिटेबल के बीच में एक थोड़ा सा ये आ गया, इसको मैं ठीक कर लूंगा। कुछ एक्सटेंशंस हुई हैं। ये जो मेरा 115 BAB में मेरे को मैन्युफैक्चर करना था, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो चालू करना था वो 22 तक करना था, उसको 23 तक करना था, उसको 24 तक अलाउ कर दिया। एंड सेकंड, जो 80IC की एलिजिबिलिटी थी टू स्टार्टअप इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू स्टार्टअप, जो मार्च 22 तक थी, उसको भी 1 ईयर की एक्सटेंशन दी, दोनों को 1 ईयर की। और ये जो मेरा फेसलेस असेसमेंट तो चल रहा है, अपील और ITAT, अपील भी चल रहा था, ITAT एंड TP को जो उनको 22 तक करना था उसको 2 साल की एक्सटेंशन दी है 24 तक की। 43B में एक अमेंडमेंट कि आप जो इंटरेस्ट आपका पेबल था, आपने उसको कन्वर्ट किया इनटू एनी डिबेंचर और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, वो कन्वर्जन विल नॉट बी ट्रीट टू हैव बीन पेड, और आपको तब अलाउ नहीं होगा जब वो कन्वर्ट हुआ। बट जब आता आप उस कन्वर्टेड एसेट इंस्ट्रूमेंट को नहीं बेचेंगे तब तक अलाउ नहीं होगा, जब उसको पेमेंट नहीं करेंगे। तो when it would be allowed only when that converted instrument is paid off। ये लोन में तो पहले ही था, ये लोन में तो पहले भी था।
Litigation in identical question 158AA ये ऑलरेडी था कि अगर एसएससी सेम एसएससी का कोई आइडेंटिकल क्वेश्चन ऑफ लॉ में मैटर पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, तो कमिश्नर ये बोलता था कि हम फर्दर अपील में नहीं जाएंगे, अपील कैप्टन अपील्स रखेंगे, दे मेक एन एप्लीकेशन बिफोर ITAT और CIT appeal that same matter is there, so we will not go in appeal up to the time when the Supreme Court decides this question of law. Now they have made certain changes, and instead of 158AA which would be omitted, which would not be applicable from 1422, 158AB would be applicable. थोड़ा स्कोप एक्सपेंड किया. पहला, आइडेंटिकल क्वेश्चन ऑफ लॉ सिर्फ सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट में भी अगर पेंडिंग हो तब भी आप कमिश्नर उसको रिक्वेस्ट कर सकता है. सेकेंडली, सेम एसएससी का नहीं, अगर किसी और एसएससी का भी है मैटर पर आइडेंटिकल क्वेश्चन ऑफ लॉ है तब भी ये प्रोविजन एप्लीकेबल हो सकता है. नेक्स्ट, जब ये अप्रूवल लेनी होगी, डिसाइड करना होगा कि अभी हमने अपील फाइल नहीं करनी, तो कोलिजियम ऑफ 2 or more CC or PC or commissioner, they will decide and inform to the AO not to file the appeal. But the AO, before doing so, will have to take the approval of the CC. And then thereafter, when that High Court or Supreme Court decides, so that is deferment of this appeal. If the CC says okay, then after that, they will have 60 or 120 days to file an appeal before ITAT or High Court. ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन, ये एक्चुअली मैंने कुछ सीक्वेंस चेंज किए थे, तो ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूशंस के अंदर फर्दर गोइंग अहेड, जब मेरे पास एग्जेम्पशन ऑलरेडी है 12A की 1023C की, but AO wants to cancel it because of specified violation, then he will have to take the approval of the principal CIT or CIT. और ये specified violations हैं क्या? These have been defined that where any income of the trust has been applied for other than the objects for which it is established. कई बार मिस्टेक हो जाती है कि मेरे पास सिर्फ एजुकेशन का ऑब्जेक्ट है और मैंने खर्चा कर दिया मेडिकल में. जिस पर्पस के लिए ट्रस्ट बना उस पर्पस पे खर्चा होना चाहिए, नहीं है तो वायलेशन हो गई, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है. ट्रस्ट की इनकम है PGBP से, बिजनेस है और सेपरेट बुक्स मेंटेन नहीं कर रखे. ट्रस्ट ने अपनी इनकम को अप्लाई किया है प्राइवेट रिलीजियस पर्पस से, जो कि पब्लिक के लिए बेनिफिशियल नहीं है. ट्रस्ट ने अप्लाई किया है इनकम फॉर द बेनिफिट ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी और कास्ट, सबके लिए ओपन होना चाहिए. या फिर एक्टिविटी इज नॉट जेन्युइन और नॉट कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशंस गिवन फॉर द रजिस्ट्रेशन. अगर आप 12A का रजिस्ट्रेशन देखते हैं तो उसमें कंडीशंस दे रखी, अगर वो कंडीशंस फुलफिल नहीं होती देन आल्सो इट कैन बी विथड्रॉन. ये पिछले से पिछले साल ही आया था. नेक्स्ट पॉइंट कि अगर कोई और लॉ की रिक्वायरमेंट है उस ट्रस्ट के लिए, ऑर्डर, डायरेक्शन, डिक्री, और वो उसकी नॉन कंप्लायंस है, तब भी ये स्पेसिफाइड वायलेशन करेगा. फॉर एग्जांपल, अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो वहां पे चैरिटी एक्ट है, यूपी में बात करूं तो वहां पे रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल होता है एवरी 5 ईयर. सो दीज कंडीशंस हैव टू बी कंप्लाइड विद. फर्दर, अब 85% से ऊपर का मैंने 85% का मैंने खर्चा नहीं किया, उससे ऊपर का नहीं किया, तो मैं जो सेट पार्ट करता हूँ 5 इयर्स के लिए, तो 6th ईयर में इनकम मानी जाती है, 5th ईयर में ही मान ली जाएगी. 5th ईयर की ही इनकम होगी, 6th ईयर की नहीं होगी. ये 1023C में नहीं था, 12A में ऑलरेडी था कि अगर कोई एप्लीकेशन हुआ फॉर द पर्पस ऑफ बेनिफिट ऑफ सेक्शन 13(3) पर्सन्स के लिए, तो वो जो बेनिफिट एक्स्ट्रा दिया है दैट वुड बी ट्रीटेड एज इनकम. सेक्शन 13 के अंदर ऑलरेडी था
1023C में नहीं था तो उसको इंसर्ट कर दिया गया टू ब्रिंग इट पार विद सेक्शन 12 में। पेनल्टी उन्होंने कहा अनरीजनेबल बेनिफिट दिया टू ट्रस्टी और स्पेसिफाइड पर्संस 13(3) वाला, तो 271A आ गया कि 100% पेनल्टी लगेगी फॉर द फर्स्ट वायलेशन एंड डबल इन द सेकंड वायलेशन, दोनों केसेस 12A और 1023C। 12A में बिफोर द ड्यू डेट रिटर्न अंडर 139(1) फाइल करने की रिक्वायरमेंट थी, 1023C में नहीं थी, वहां पर भी ले आए, वहां पर भी ले आए। अगर आपकी एग्जेम्पशन को डिनायल होता है which violates the conditions prescribed, तो जो टैक्स होगा that would be on the income after allowing the deduction for expenditure other than capital expenditure, subject to कि अगर आपका एक्सपेंडिचर जो हो वो कॉर्पस से खर्चा नहीं होना चाहिए, उस साल की इनकम से होना चाहिए, वो आपका खर्चा जो है वो किसी लोन या बोरिंग से नहीं होना चाहिए, डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं होना चाहिए, आपने ये जो खर्चा किया दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ एनी कंट्रीब्यूशन और डोनेशन। बाकी खर्चा अभी तो क्या पूरी इनकम को टैक्सेबल करते थे, खर्चा अलाउ नहीं करते। नाउ दे हैव ब्रॉट अ क्लैरिटी कि कैसे खर्चा। 13(1)C 13(1)D को अमेंड किया दैट आपका जो डिसअलाउंस होगा ऑन द वायलेशन ऑफ दीज टू प्रोविजंस, ओनली दैट पोर्शन ऑफ इनकम विच इज वायलेशन जो कि 11(5) से ऊपर है या फिर 13(3) में आपने अनड्यू बेनिफिट दिया, ये मेरा 11(5) का हो गया और ये मेरा 13(3) के पर्सन को हो गया, वो मेरी टोटल इनकम में आ जाएगा। और टैक्सेबल कैसे होगा, 115BBI आया जिसमें कहा कि ये जो मेरी वायलेशन की वजह से है स्पेसिफाइड इनकम वो 30% टैक्स होगा, बाकी मेरा नॉर्मल टैक्स होगा। जैसे कोई डिडक्शन एक्सपेंडिचर इस इनकम में से अलाउ नहीं होगा, कोई लॉस भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। एक उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी ये दिया क्योंकि बहुत सारे रिलीजियस प्लेसेस हैं, टेम्पल्स, मॉस्क, गुरुद्वारा, चर्चेस जो कि 80G के अंदर है। एक स्पेशल प्रोविजन है, उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन इंसर्ट किया है कि ये जो मनी फॉर द रिनोवेशन और रिपेयर ऑफ टेम्पल्स, मॉस्क, गुरुद्वारा आते हैं दैट वुड बी ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ कॉर्पस, क्योंकि क्या उसके अंदर वो कॉर्पस फंड के लिए दे रहे ऐसे नहीं आता, वो स्पेसिफाइड आता है कि भैया इनके रिपेयर के लिए दे रहे हैं। तो कहा कि दिस वुड बी ट्रीटेड एज कॉर्पस इफ सच कॉर्पस इज अप्लाइड ओनली फॉर द पर्पस फॉर व्हिच इट वाज गिवन, यानी रिपेयर या रिनोवेशन उसके खुद के लिए, किसी और के लिए नहीं। It does not apply corpus for making contribution or donation to any other person, खुद के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के रिपेयर के लिए, ये किसी और के लिए नहीं। Maintain such corpus as separately identifiable. It is not merged into normal corpus, but say building fund, repair fund, something like that. Repair corpus, whatever it may be. Invest or deposit such mode in 11(5). ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बुक्स तो मेंटेन करा दी इन्होंने, कहा एप्लीकेशन अक्रूवल बेसिस पे तो आप बुक्स मेंटेन कर रहे हो, बट एप्लीकेशन तभी अलाउ होगी जब आप एक्चुअली पे करोगे। अगर आप पे नहीं करते तो इट वुड नॉट बी अलाउड एज अ एप्लीकेशन, नॉट बी अलाउड एज एन एप्लीकेशन। 12A में ऑलरेडी था, 1023C में नहीं था, ले आए, ये टीडीएस नहीं काटा तो एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा। कैश में हुआ 10,000 रुपए पर पर्सन पर डे, एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा। अगेन ब्रिंगिंग द टू प्रोविजंस दैट पार्ट। आपका कोई भी सेटअप ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस अलाउड नहीं होंगे। 12A में तो ऑलरेडी भी है, एक्सेस एप्लीकेशन हो गई तो कैरी फॉरवर्ड 12A में पिछले साल रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, 1023C में भी ले आए हैं सेम। Any questions on this trust, because ये अपने आप में बहुत बड़ा है ट्रस्ट। मुकेश जी। यस सर, ये ऑडिट फीस वगैरह अगर प्रोविजन
पेमेंट करेंगे तभी एप्लीकेशन बना जाएगा। अगले साल होगा जब इसमें तो टैक्स वगैरह जो पे करते हैं वो भी एप्लीकेशन का पार्ट बन जाता है, तो वो सब भी नेक्स्ट ईयर में। पहले वो बोलते थे ना ITR फाइल करने से पहले कर दो, तो आप इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये बड़ा बहुत दोबारा पूरा का पूरा जब हो जाएगा फाइनल क्या करते हैं तो दोबारा पढ़ना पड़ेगा ट्रस्ट वाली। यस। नॉन रेजिडेंट्स के लिए एक तो छोटे छोटे चेंजेस, एक तो यूनिट्स ऑफ IFSC को प्रमोट करते जा रहे हैं, तो उसका ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के ट्रांसफर की एग्जम्पशन है, इंटरेस्ट रॉयल्टी है फॉर रेंटिंग ऑफ लीज ऑफ शिप जो कि 31 मार्च 24 से पहले हुआ है, या फिर पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटीज फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं ऑफशोर बैंकिंग की, उनकी एग्जम्पशन है। कुछ एग्जम्पशन जो नॉन रेजिडेंट को दे रखी थी, वो प्रोजेक्ट ऑफिस के लिए इंडिया में आते थे तो उनकी रेम्यूनरेशन फीस एग्जेम्प्ट थी 8888B 9 ऑफ सेक्शन 10, वो विड्रॉ कर दी। एंड ये एक बड़ा अच्छा अमेंडमेंट है कि मान लीजिए किसी का ऑलरेडी डिमांड क्रिएटेड है, बट जब वो IBC में चला गया तो IBC में तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स अपने आप ही अपना रेजोल्यूशन प्लान करके वो सब वेव कर सकती है, रिड्यूस कर देती है। पर 156 डिमांड को मॉडिफाई कैसे करो, तो 156A आया जहां पर 156 को आप अमेंड कर सकते हो, डिमांड को रिड्यूस कर सकते हैं, विच वाज नॉट देयर अर्लियर। ये 56(2)(7) जो प्रीमियम इन एक्सेस ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स इशू करने में थे, तो एग्जम्पशन थी अगर जो स्पेसिफाइड फंड्स हैं विच वर रेगुलेटेड बाय सेबी, तो वो स्पेसिफाइड फंड रेगुलेटेड बाय IFSC एक्ट आल्सो इज एग्जेम्प्टेड, वो प्रीमियम जितना मर्जी ले सकते हैं। ये भी एक नॉन रेजिडेंट का पॉइंट है कि अगर मान लीजिए मेरे को टैक्स डिडक्ट नहीं करना था, बट मेरे को उसकी वजह से क्योंकि उसकी लाइबिलिटी नहीं थी, बट फिर भी ऑर्डर की वजह से मेरे को पे करना पड़ा, तो मेरे को उसका रिफंड का प्रोसीजर क्या था कि 248 में अपील फाइल करनी पड़ती थी। वो 248 उन्होंने विड्रॉ कर दिया, कहते आप रिफंड अप्लाई करना है तो 239A के अंदर अप्लाई करो। और ये मेरा जो एक बोनस ट्रिपिंग था 94 में, वो यूनिट्स के ऊपर था, वो शेयर्स के ऊपर भी ऐड कर दिया। So these were the major changes proposed in the Union Budget 2022, and everyone knows about this. Most of us, you must be knowing about this expertspanel.in. Anyone can sign up here. फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको एक ईमेल आएगा, ईमेल के लिंक पे क्लिक करेंगे, उस आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा, फिर आप लॉग इन करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, GST, इनकम टैक्स, कंपनी लॉ, RBI, फेमा, आंसर आपके ईमेल में आएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर भी आ जाएगा। एग्जिस्टिंग क्वेश्चंस को आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, प्रेजेंटेशंस हैं, वीडियोस हैं, नोटिफिकेशंस हैं, कैटेगरी वाइज। आपको सिर्फ कंपनी लॉ के देखने हैं तो सिर्फ कंपनी लॉ में जाइए, उसके आर्टिकल प्रेजेंटेशंस देख लीजिए। More than 32,000 answers have already been given by nearly 120 experts throughout the country. There is a mobile app of this. You can go through mobile app or this portal any way you want. Mobile app में ये चीजें नहीं है, question answers हैं. And this presentation I'll be uploading on this portal lunavar.com, and also this free mobile app you can download, जिसमें सारे updates हैं 2007 से तक, और ready to use charts हैं इनकम टैक्स, GST, कंपनी लॉ वगैरह के, जो आप कभी भी यूज कर सकते हैं। एंड आई थैंक ईच एंड एवरीवन फॉर हियरिंग मी ऑन दिस प्रोजेक्ट 2022, एंड आल्सो थैंक लक्ष्मी नगर CP स्टडी सर्कल, मुकेश जी, आशा जी, हमारे कन्वीनर साहब, डिप्टी कन्वीनर साहब। एंड इन दिस टाइम एंड ऑलवेज आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज stay safe, healthy and happy, and remain positive in your life. I am available on this mobile number, this email ID, various social medias, Twitter वगैरह, वहाँ पे आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी मैं अपडेट करता हूँ वो आपको ट्विटर वगैरह पे इमीडिएटली मिल जाएंगे। Thank you very much once again. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you for giving your time. Now I request Mukesh ji to give vote of thanks to Pramod ji. थैंक यू सर। आपने जिस तरीके से जितना डिटेल में इस बजट में जो प्रपोजल्स हैं उसको डिस्क्राइब किया, हमारे ज्ञान को जो बढ़ाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमेशा की तरह लक्ष्मी नगर स्टडी सर्कल में आप फिर
अपना कीमती समय आपने दिया है। तो ये हमारे लिए बड़ा ही गर्व की बात होती है कि जब भी हम याद करते हैं आपको तो आप जरूर आते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं स्पेशली आज का सेशन 2 दिन पहले से ही उसको मार्क करके रखा था कि सुनूंगा पूरा, क्योंकि 1-2 जगह मुझे भी देना है, तो और थोड़ा सा जितना बार सुनो तो उतनी क्लैरिटी आती है। तो अभी परसों ही मुझे पटना में एक फिजिकल लेक्चर देना है इसी के ऊपर, तो बहुत सारा क्लैरिटी आज भी आया आपके इससे, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और लक्ष्मीनगर स्टडी सर्कल पूरी टीम, साथ में आशा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा समय दिया, हमेशा देते हैं आप लक्ष्मीनगर स्टडी सर्कल के इसमें, और पूरा जिस तरह से कोऑर्डिनेट करते हैं और एक एक क्वेश्चंस को लेते हैं आप, वो बड़े काबिल तारीफ है, जिसके कारण हमारा काफी इंटरेक्टिव हो जाता है सेशन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सर। इसका क्रेडिट तो हमारे आज के स्पीकर को जाता है, वो जितना इंटरेक्टिव रखते हैं, वो पूछ के कोई क्वेश्चन है तो अगर भाई नहीं देखो हेल्पर्स भी यही रहता है, आशीष बोलने जी वाले होंगे तो भी ये एक बार तो पूछ ही लेते हैं। यस सर। भाई किसी का कोई क्वेश्चन है, हेजिटेट कर रहा है, पूछ ले, आंसर हो जाएगा तो उसका पर्पस सर्व हो जाएगा। और क्या और तो आप तो सर That's a good thing. इतने ही रिस्पेक्टेबल और प्यारे, पूरे पैन इंडिया बेसिस पे आपका इतना ही ज्यादा आपके सेशन का इंतजार रहता है सारे प्रोफेशनल्स को, तो ये बहुत बड़ी बात है। और आप जिस तरह से रिवर्ट करते हैं, रिस्पॉन्स जिस तरह से करते हैं, वो काबिले तारीफ है, इसीलिए हम सबके आप प्रिय हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद सभी अटेंडीज को जो अपना कीमती समय निकाल करके आज के Thank you so सेशन much, sir. को इतना सक्सेसफुल बनाया। सभी अटेंडीज को धन्यवाद, हमारे कन्वेनर और डिप्टी कन्वेनर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद इतने वंडरफुल सेशन ऑर्गेनाइज करने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू प्रमोद जी, Thank you so थैंक much, यू, sir. थैंक यू हेमंत जी, थैंक यू। मीटिंग एंड कर दो, होस्ट कौन है?